you've got nothing else to do, why don't I tell you a story? निश्चय तू किसके डिस्कॉर्ड पर बैठा है? अरे मेरा खुद का है, मैं खुद के डिस्कॉर्ड पे बातें करता हूँ लोगों से। तेरे को नहीं पता क्या मेरे डिस्कॉर्ड का नाम? गेमिंग लेवल। भाई क्या हाल चाल? मैं ये थोड़ा ये स्टोरी मैंने छोड़ रखी थी, क्वेस्ट करना था इधर का। ऑलमोस्ट मैं बिल्ड कर चुका हूँ यूमिया को। डिस्क्रिप्शन में देख, मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक होगा। कर लिया ज्वाइन। मेरे को वैसे इसमें क्या करना था? रुक, मैं भी ज्वाइन करता हूँ। रुक, अपना तो बात करना है तो उधर से कर सकता है। Up and away. मैं थोड़ा ये मिशन टाइप का ये कर लेता हूँ पहले तो, छोटा सा। Ooh, will we find any firework materials in here? मुझे लेटर ढूंढना है ऊपर की साइड में कोई, तो किधर 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 है? 4। Ooh, will we find any firework materials in here? मिल नहीं रहे। अरे नहीं, डिस्कॉर्ड तो पहले से ही था। डिस्कॉर्ड पहले से ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो। हाँ, चैनल का नाम है डिस्कॉर्ड पे, badlegendx, डिस्क्रिप्शन में देखो। चैनल का नाम है ये, लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये बंद हो गया। लाइव स्ट्रीम अपने आप ही बंद हो गया क्या? नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। ये रहा, इसको ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से ऊपर चढ़ के। यही ढूंढना है ना मेरे को? यही ढूंढना है। 4 और ढूंढने, छतों पे ही मिलेंगे। सभी ज्वाइन हो जाओ डिस्कॉर्ड पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसी जगह देखा था, पता नहीं किधर चले गए, आसपास ही होंगे।
एक और ये रहा। इसके हेलो, क्या हाल चाल। कल तो स्ट्रीम नहीं हो पाई थी अपने, आज हो रही है पर। दो और किधर ही होंगे, किसी छतों पे। देखा था भाई। वैसे देखो, क्या बोलते हैं, अभी मैं इसका टैलेंट वैलेंट तो अब कर दिया हूँ। ये दोनों 5-5 हो चुके हैं। उससे आगे तो भाई मटेरियल चाहिए, पर आज अवेलेबल नहीं है ये मटेरियल। ये तुमने कराया था ये तो। और मेरे पास बुक्स की कमी है अभी। आज मैं मीका की स्टोरी करूँगा, और ये जो मैं कल कर छोड़ा था, वेपन वेपन भी हो चुका है। हाँ, ये रहा अपडेट। इतना किया हूँ, पर ये 50 करना पड़ेगा इसके लिए। लेवल 90 करने के लिए वेपन 50 करना पड़ेगा। ये एडवांस रैंक, AR रैंक। अभी तो मैं मरना नहीं चाहिए। जैसे मरता हूँ, डैमेज में देखा हूँ थोड़ा सा देता है, 6000 समथिंग अभी। दो और ढूंढना मेरे को ये, तो और एक और इस उधर था, याद आ गया मेरे को। इन किसी छतों पे एक पड़ा हुआ है। कल जंगली मिला ये टेबल पर C1 8 रुपये। तुम्हारा तो लक अच्छा है, तो तुमको जंगली मिल गया। मेरे को तो अभी दर्शन ही नहीं हुआ किसी और कैरेक्टर के। ये मैं मतलब फायर नहीं कर रहा हूँ, अपने आप ही हो रहा है। कोई ना, मिल तो गया। मेरे को तो मिला ही नहीं, ना ही मेरे को मिलेगा अभी। मेरे को बस वो मिल रही है, फिसेल मिल रही है बार बार। फिसेल C2 की हो चुकी है अभी। कोहली C1 की है, और थोमा भी C1 का ही हो गया है। वही मेरे को भी निकालना ही है। जंगली निकल जाएगा तो अच्छी बात है। वैसे तो मुश्किल ही है जंगली निकलेगा मेरे में। डेंड्रो ट्रेवल अच्छा है। हाँ भाई, पर मैं यूज़ नहीं कर रहा उसका। मैं उधर जाऊंगा तब यूज़ करूँगा। मेरा इसका कॉम्बो बन गया ना, मैं इसीलिए ट्रैवलर पे नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं वो ढूंढ रहा हूँ छतों पे चढ़ के, क्या बोलते हैं, जो कागज़ से पड़े रहते हैं, पर मिल नहीं रहे मेरे को। दो तो मिल गए मेरे को, और दो बाकी है अभी। सेकंड टीम के लिए। हाँ, वो जो उसमें फ़ाइट होती है, क्या बोलते हैं,
फ्लोर फ्लोर वाला जो भी सिस्टम होता है फर्स्ट सेकंड उसके लिए। अरे वेपन कर लेके क्या ही करूँगा मैं, वैसे तो बताओ। अभी एक और कोई मेन कैरेक्टर मिलना चाहिए, जंगली हो गया शील्ड के लिए। मैं तो उसको शील्ड के लिए यूज़ करूँगा, मिल जाए तो बस शील्ड ओनली, क्योंकि वो भी स्पेयर यूज़ करता है ना, तो मेरे पास स्पेयर तो है नहीं उसके लिए। हम्म, वो भी 8 पुल में निकाला था मैं, जिस दिन वेपन बैनर जाने वाला था 8 पुल ओनली। ऐसा बता के जलाना होता है। इधर मिलेगा जंगली कोई भी वेपन यूज़ कर सकता है, ऐसा है क्या? मेरा स्ट्रीम रुक मतलब अटक रहा है क्या किसी के में? मेरे डिवाइस में अटक रहा है क्योंकि ऐसा है, पर तो निकल, मेरे को मुश्किल ही लग रहा है जंगली निकलेगा। मैं कितना पुल कर चुका हूँ अभी तक, मतलब कितना विशेष किया मैं। हाँ 38 पुल कर चुका हूँ मैं अभी तक। हाँ अटक रहा है वही, 38 पुल्स। और प्रीमियो जेम्स मिल ही नहीं रहे हैं। मैं तभी मीका की, आज मीका की स्टोरी करूँगा अभी, मतलब ये कंप्लीट कर लूँ ना, ये टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा। ये मेरे को पता नहीं कौन कौन से छतों पे मिलेगा ये मेरे डिवाइस से लाइव स्ट्रीम खुद ब खुद कट ही जा रहा है, क्या सीन है इसका? है लाइव स्ट्रीम चल रहा है क्या? क्या सीन चल रहा है? नहीं जोंगली निकाल लूँगा मैं, इतना भी वो नहीं है। अगर बोलते भी, अगर मैं क्या बोलते 50-50 जो भी है सीन, वो हार गया तो गलत गलत है। 50-50, 50-50। ऐसे तो मेरे को कोई और कैरेक्टर मिल जाएगा तो भी मैं खुश रहूँगा। 50-50 जो लोग बोलते हैं हारने के बाद दुखी हो जाते हैं। अरे मेरे को वो चाहिए, क्या बोल रहा हूँ, 4 इधर से कलेक्ट करने से 2 मिल चुके हैं, अभी तक 2 नहीं मिल रहे हैं। मैं किसी ऊँची जगह बजाता हूँ। वही मिल सकता है। अगर मैं हार भी गया ना, अगर मेरे को कुछ और मिलता है जैसे चीची मिल जाएगी तो भी सही है। क्योंकि मेरे को कैरेक्टर चाहिए चीची। मैं तो सोच रहा हूँ हार जाऊँ जोंगली के लिए, चीची आ जाए मेरे पास, खुश हो जाऊँगा। ये मेरा स्ट्रीम मेरे में ही वो हो रहा है, और गलती से निकल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे चीची चाहिए तो मेरे को जोंगली मिल जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मेरे को चाहिए वो मेरे को मिलता नहीं है।
मैं ये जितने भी वेपन निकले ना, मैं किसी को नहीं, मेरे को कोई वेपन नहीं चाहिए था, तो ये वेपन भी नहीं चाहिए था मेरे को, फिर भी वेपन दिया इन लोगों ने। ये अच्छा है सिर्फ ये चिड़िया मारने के लिए। किधर है वो? इन छतों पे ही मिलेगा मेरे को, जो मैं ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहा है। क्या गिर रहा हूँ मैं? पहली बात तो रेंडर नहीं हो रहा, तो मेरे को दिखेगा कैसे? मेरे को सब छतों पे जाके देखना पड़ेगा, तो ये कलेक्ट करना बहुत हार्ड है। अरे मैं नहीं मार रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों चलता है अपने आप पे। ये कलेक्ट तो फिर मैं मीका की स्टोरी करूँ। चढ़ पाऊंगा क्या मैं ऊपर? नहीं। कैसे होगा ये मिशन? तो इसका स्टेमिना इतना स्लो में रिकवर होता है। मैंने ऐसी किसी जगह पे देख रखा है, दो मिलते हैं, दो बचे हुए हैं पूरे। क्या होंगे दो? या तो मैं किसी और की वीडियो देख लूँ। Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Fireworks are for now, but friends are forever.
Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. किधर है? एक मिनट में देखा ही नहीं चैट। AR47 लेवल। ये देखो AR47 है ना, ये देखो देखो, ये देखो। एडवांस मेरे को ये, हाँ ये रहा, इधर भी एक है, इधर भी तो मिलेगा। मेरे को एक लास्ट चाहिए। मिल गया मेरे को। एक आखिरी चीज़ चाहिए मेरे को। आखिरी किधर मिलेगा? फिर छतों पे घूमना पड़ेगा ये। लास्ट एक बार इधर से आता हूँ मैं। ऊपर से उड़ता उड़ता दिख ही जाएगा ना। अरे ये तो रहा। चलो ये मिल गया लास्ट वाला भी। अब मिका की स्टोरी कर सकते हैं हम। अच्छा इसको देना भी तो है। मिका इतनी बिल्डिंग में से 4 बिल्डिंगों पे सिर्फ था ये। छह बुक मिला और ये फूड मिला है। 20,000 मोरा मिला है मेरा। इसी को अप कर रहा हूँ। 78 लेवल। Fireworks are for now. मिका की स्टोरी करेक्ट में मिका। इधर से प्रीमो जेम्स तो मिलेंगे बॉक्स अपग्रेड करने के लिए।
wishing house in a while. Paimon wonders if they have any new books in. The one we read with A that time was pretty cool. Come on, this is a no-brainer, man. There's only one thing worth wishing for, and that is a ton of Mora. But the exam's next week. If I fail again, I'm seriously done for. It's just an exam. Trust me, there's no problem you can't solve by throwing Mora at it. If it... What are they arguing about? It's quite a spirited debate. Huh? Really? You guys don't know? You need but stand on this land at midnight, lower your head and recite a special incantation, then your wish will come true. Looks like you guys really aren't in the loop. This, my friends, is the next big thing. A highly effective wish ritual guaranteed to make your wishes come true. A wish ritual? That actually works? Right? Even Paimon knows that's just not how the world works. I didn't believe it at first either, but that changed when it worked for someone I know. It's this guy called Kunihiko. He's practically always been unemployed, wastes his days away, and he owes a lot of money. Like a lot. But get this. I don't see him for a few days, and suddenly I find him dressed to the nines and feasting at a high-class restaurant. I heard it directly from him. He used this wishing ritual, and the next day he woke up to find his whole bed filled high with Mora. His whole bed was filled with... Wow! Of course, I'm sure the part about waking up lying on a bed of Mora is a bit of an exaggeration. Whether you believe it or not, it's not exactly a difficult ritual. It can't hurt to give it a try, right? If you're still feeling skeptical, just ask around. There are a lot of very compelling stories going around these days. Really? Well, come on! Let's go ask around right now, shall we? Well, if it really is true, then just think of all the Mora Paimon could... Oh, and you'd finally be reunited with your twin too! Let's go, let's go! Inspection, it seems like there really are a lot of people talking about this kind of stuff. Grasp the thought in mind. Clear like the light of the moon. As close as kin with you. No, thou. Wait, thee? Hear my summons, right? No, it's not hear my summons, it's heed my summons. Heed! You're never going to get it down at this rate. Hey! What are you guys up to? Whoa! Sheesh, you scared me. Okay. Okay. Where did I leave off with the incantation again? Incantation? Are you guys trying out this new wishing ritual stuff too? Junkichi is trying it out, to be specific. He's hit a bit of a creativity block recently, so... I'm helping him make a wish so that he can move past it. I mean, I obviously don't. But Junkichi never listens to an outside opinion, so all I can do is go along with it. Mr. Shigeru, can you please be a little more accommodating? This is extremely important to me. People have had all kinds of wishes come true. Become more attractive, get rich quick, ace their studies. I'm just a poor, struggling writer looking to get over a creative hurdle. Is that so much to ask? Anyway, I just know this is going to work. Didn't you say the same thing when you went to make your wish at the Grand Narukami Shrine? Oh, The Omamori from the shrine take too long to have any effect on... Look, to be completely honest, I think look at you now. Trying dubious methods from any old light novel. Wait. What? This wishing ritual comes from a light novel? Yep, it's from the one called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. No, it's most likely a self-published title. As a fellow writer, I'll refrain from passing comment on how well the story is written, but Look, Junkichi. Yes, everyone's saying it's real, it works, but that's only half the story.
I've also heard lots of people saying that everyone who's had their wish granted using this method starts behaving. What's so surprising about that? This is starting to sound a little suspicious. Why don't we go to the Grand Narukami Shrine and ask Yai Miko about it? She's the expert when it comes to both light novels and the supernatural. You're here. Well, hello there, young ones. What brings you to the shrine? It just so happens that I have a wonderful novel here. Oh? Well, what did you want to ask? Well, we were just... actually, you look kind of busy. Is this a bad time? No, not at all. It's nothing major. Lady Guji, what do you mean, nothing major? I'm begging you, you've got to help me save my brother. It really is nothing major. I stand by that. Oh, but since you're so curious, let's have him relate the story one more time, just for you. You two seem to have a good relationship with Guji I. Please, put in a good word for me. You have to convince her to help my brother. Here's what happened. My name is Kato Yohei. Domon turned him away. Took one look at, but since his victory, he's been... You know, there really aren't as many evil spirits lurking around as you seem to think. Your brother achieved the goal he'd been striving toward for as long as he can remember, and if it were me, I'd just leave him be for a couple of days. No, Lady Guji. If you saw him for yourself, you'd know. Oh, all right, all right. Then tell me, when did your brother spar with Domon's disciple? About 5 days ago. 5 days ago, you say? Yes, Lady Guji. That's a long time for him to be acting up like this. I'm really worried about him. Our greatest wish is to one day found our own school, just like Domon. Wait a minute, now I'm a little confused. Are you here to save your brother, or are you here to make your dreams of founding a martial arts school come true? Well, they're kinda two sides of the same coin, aren't they? Whatever. Let me ask you this. Have you heard of any interesting new rumors lately? What? Rumors? I haven't heard any. Oh dear. Well, that's too bad. Lady Guji, please stop changing the subject. This is someone's life we're talking about here. Please, you've gotta help me. Miko, he seems really desperate. This thing with his brother sounds really bad. Okay, fine. Then it's decided. Yay, Miko! So you're gonna help him? Kato, whatever your name was, these two guests are trusted acquaintances of mine, and in fact, they are experts in resolving all manner of strange and supernatural phenomena. Yeah! Wait a sec! Really? Is that hesitation that I detect in your voice? So let me get this straight. You come begging to me for help, I actually recommend someone for the job, then suddenly you start doubting me? Not at all, never. Whatever Lady Guji says, I trust wholeheartedly. Thank you two for your willingness to help. Please follow me. Now hold on a hot second, Miko! We may be a lot of things, but we ain't exorcists! Don't worry. If he wants an exorcism, just grab a handful of salt and mutter some mumbo-jumbo while you're sprinkling it around. It's a common trope in light novels, right? Well, you were the ones who seemed concerned about his situation.
Don't you think it would be a little unfair to make me do all the work? Besides, we both know you wouldn't be here at the Grand Narukami Shrine unless you had a request for me too. This feels all wrong. But you technically have a point, so... Alright, let's go. Don't worry now, I'll be coming along too. Okay, let's follow Yohei and go visit his brother. What is going on here? Grand... Well, a life's at stake here, so it looks like we'll have to deal with that first before we'll get the chance to ask her about the incantation stuff. How strange. My brother's been meditating here pretty much constantly over the past few days, but now he's gone. Meditating? Yeah, it's something that he suddenly started doing after defeating Domon's disciple. But that's not important right now. Where the heck could he have gone in his current state? This does pose a bit of a problem. If we can't find your brother, well, we can't perform an exorcism with nothing to exorcise, can we? Kato, whatever your name was, given the circumstances, why don't you start by going to find your brother, and also picking up a handful of salt on your way? We'll need... Okay. Okay, got it. I'm on it. Nico, what about us? Shouldn't we help look for his brother too? No need. While What's-His-Face is handling that, we... Hello, sir. We'd like to ask you about the Kato brothers. Oh, are you debt collectors? Yohei said to tell you not to worry. He'll be able to pay you back as soon as he has enrolled a few disciples. Huh? Debt collectors? No, we're not here for anything like that. But, it sounds like Yohei and Shingo have gotten themselves into a bit of a pickle. Well, yes. I don't think there's any disputing that. Those two don't have an ounce of dedication between them. Huh? But Yohei said his brother has always wanted to become a sword master, and... That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on, and eventually, he finally relented. In the end, Domon had had enough and kicked him out. But Shingo was resentful about it. Wait, what? That's not what we heard. Oh, how interesting. We heard a slightly different version. My brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. Yohei said that? That Shingo trained hard. That's ridiculous. Yohei did tell me about Shingo winning the fight. Hey there, we've come to ask you about the Kato brothers. Oh. Oh, you mean Shingo and Yohei? Yeah,
apprentice of Domon's recently. Yes, it's true. Wait, so are you here because you heard they're starting their own school and you're looking to sign up? We're not here to sign up, but we would like to hear more details about the fight. Well, you've come to the right person. I actually went to watch it. I thought it was a joke when I first heard that Shingo was going to challenge a disciple of the Meikyo Shisui. The way he handled his blade, it was like flowing water. Mesmerizing to watch. Domon's disciple is no pushover, but he was Is Shingo really that strong? Yep, he seemed pretty euphoric after winning the duel, too. He was celebrating very vocally, saying something like, "What a duel. I haven't felt this good in a long time." Any other details to share? We've heard that Shingo has been behaving rather out of character since then. I'd definitely say that he has more energy than he used to. But just yesterday, for example, I saw him cutting down trees for the village head. In the space of one afternoon, he did what most people couldn't finish in 3 days. Oh, Quite impressive. Things got weird after that, though. The village head brought out some tofu for him, and he just flipped out. Lady Guji, esteemed exorcists, I found my brother. He's at the waterfall, and I've got the salt you asked for, too. Come on, let's go! Oh, as much as I'd prefer to stay and hear some more delicious details. time for a light show. It's a lucky day! Fire hazard. Hi, Barry. Fuse is lit. Finally, No. Goes the ship down. Fire hazard. It's my lucky day! Say no more! Finally, That didn't count. The fuse is lit. The fairy. Oz, reveal thyself. Time for a light show.
अभी तो मैं स्टोरी कर रहा हूँ। एक मिनट। मैं मीका की स्टोरी कर रहा हूँ, मीको मतलब। हम्म। इसमें ग्लिच फिर भी है अभी भी। मैं किधर भी अटक जाते जाते। Look over there. That's him at the डिड waterfall. यू अनलॉक सिमर? हाँ मैं कर लिया, अनलॉक कर लिया मेरे पास। दिखाता हूँ। ये कैरेक्टर फ्री मिलती है इसकी पहली क्वेस्ट करने पे, मतलब स्टोरी जो भी है वो। इसका मेरे पास C1 है, पर यूज़ नहीं करता। मेरे पास वो वाला कैरेक्टर अच्छा है। पता है। ये रहा, अनलॉक कर रखा हूँ मैं। ये रहा। हम इससे इसके दो हैं इधर बॉसेस, इसके साथ भी खेला है। मैं तो एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, पर अनलॉक करके छोड़ रखा हूँ। स्टोरी किया हूँ बस, ऐसा स्टोरी बस। अभी मिका की स्टोरी चल रही है वैसे। Hey, listen! He's talking to himself. Woo! How's that? Can you feel it? तो मेरा इंडिया साइड लगता तो है। Can you feel the feeling? उसका साउंड ही, मतलब जो म्यूजिक चलता है वो इंडिया का लगता है। Found your own school. Ha! So shallow. How can a manly man aspire to something? Please, spare me. Spare me. I can't feel the manliness. I can't even feel the cold anymore. I can't take any more. I'm gonna die. Yohei. Yohei! Save me! Save me! Did you hear that? All the nonsense aside, he's going for help! Huh? Who goes there? He stood up! And now he's coming this way! No, don't come any closer. Help! What do we do? Miko, think of something! Oh, poor thing. Yohei, your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to call on you for help. Whatever shall we do? Well, how should I know? The way it looks to me is that Shingo feels terribly resentful to you about something. Would you mind telling me what that's all about? I don't know what to tell you. You don't know? But surely you should have more insight than anyone else into how your brother came to be this way? Yohei, I suggest you think very carefully before you open your mouth again. This is a life or death situation. Your brother is your closest relative. You must have noticed straight away when he started acting out of character. And yet, 5 whole days pass before it occurs to you to come and seek help from me.
You really expect me not to notice the gaping holes in your story? But I... As you wish. It's fine by me if you don't want to tell the truth. But after Shingo dies, you'll be next. It's futile trying to escape. Anywhere in the world you run to, it will be right behind your back. Ah! All पूरा right, डरा के रख I'll दिया। talk. I'll tell you everything. My brother and I used a wishing incantation. We made a wish. Yes, that's it. The one that's all the rage right now. Just like the book described, we drew the magic symbol, stepped inside it barefoot at midnight, said the incantation, and lo and behold, spheres of light appeared all around us. After my brother wished to become a swordmaster, it really worked. Out of nowhere, he suddenly had these amazing sword skills. Because I was worried that if he goes back to normal, he'll lose his skills with the sword. If that happens, it'd ruin our plans to start a martial arts school, and we'd be back to being poor. So then, why'd you go to the Grand Narukami Shrine? Well, because with the way he's acting now, I was worried Yeah. that rumors might start spreading that he's gotten involved in the occult arts or something. And then no one would want to sign up as his आवाज नहीं आना disciple. चाहिए बस। हाँ तो मसिल पेन रहने दे। So I was thinking कल that तो maybe स्ट्रीम Lady किया नहीं था, Gucci मैं might आज have a करने way to इसलिए get my बैठा हूँ brother कि back कोई to नहीं है। normal, but let him keep his sword skills? My, look at you with your ingenious schemes. Stop deluding yourself. These newfound sword skills are not his. They belong to the spirit that has possessed him. You're right. We were wrong to do what we did. All right, then. Your turn now, my little friend. Toss the salt, and then draw your sword. What is that? It's the spirit! See that? That's what you summoned. And look, now that Shingo's no use, it's coming straight for you. Save me! Save me! Miko! He fainted! What do we do now? We do nothing. But you, little one, just a quick fight and this will all be over. Who's this? Ah, a fellow swordmaster. Come on, fight me! He's coming! Be careful! Let me try my The fuse is lit! Gotta watch it. अबे 82 का है, मैं तो ध्यान नहीं दिया इसको। Break a leg! Shadow Raven, let night fall! Here come the fireworks! Time for a light show! पर अच्छा है, मैं अपग्रेड हूँ और मरने वाला है ये। हरा दिया मैंने। That was great! Excellent! Whoop! What a rush! I haven't felt this great in a long, long time. हार गया और गायब हो गया। Disappeared. But he looked pretty content at the end there. Huh. Well, Paimon sure is confused. Ah, we can talk about it later. They're about to wake up. What am I doing here? Yohei? Yohei, is that you? Shingo, are you alright? Yohei, I had the weird... I dreamed that I wasn't a useless... I thought we could finally open a dojo of our own now. I was terrified, and I wanted to take control of my body back, but I couldn't. And the voice kept talking about manliness. Shingo, we shouldn't have made that wish. Yes, and had we not come to your rescue, your life would have been over before too much longer. Thank you, Lady Gucci. And All right, take him to get... He will experience a high fever, but it won't be fatal.
At this point, I would normally lecture you on the dire consequences of using occult methods to obtain power that does not belong to you. Yes, we understand now. We won't do it ever again. Thank you, Lady Guji. Thank you, exorcists. We'll be on our way then. मीको के साथ पर मेरे को फाइट Shingo. करनी थी, दे दिया नहीं, लोगों ने कंट्रोल ही नहीं दिया. Nico, would they really have lost their lives if we hadn't gotten involved? And if so, why the heck were you so reluctant to help out? They would have been fine. I had to scare them a little, though. Otherwise, I hardly think these two lazy rascals would have learned their lesson. So, what was it that possessed Shingo? You saw it all for yourselves. I'm sure you can figure out what kind of spirit had possessed him, can't you? Ah! Paimon's got it. It was Oni. Correct. Although it possessed Shingo, it didn't have any ill intentions. As a matter of fact, it Fair enough. But it seemed like it had the opposite effect. Tossing salt caused it to temporarily leave Shingo's body. Even if we'd done nothing at all, of course, it would have been more stressful for Shingo and Yohei that way. Whew. Well, the main thing is that nobody got hurt. All right, seems like we've wrapped up everything here. Hold on, Miko. You say everything's wrapped up, but are you sure about that? You mean you disagree? Oh, you mean that they got the incantation from that book. Actually, that book's the whole reason we came looking for you at the shrine today. Human beings don't have powers like us yokai. It's quite understandable for them to be interested in incantations to summon the supernatural. That's not the point. The problem is that the incantations in the book are actually capable of summoning spirits and stuff. And loads of people are trying it. Even then, humans only have so much strength. Even if they do successfully summon a spirit with the incantation, But who wrote this book? And what do you think, Traveler? Well, when you put it that way, she has been pretty trustworthy so far. She said from the beginning that it wasn't anything major. Lady Yai, I finally found you. Kuroda, what are you doing here? I'm here to report on Yai Publishing House's sales for the last month. All the numbers are here. Please take a look. Let me see. What? We're losing market share? Yes, overall bestseller, reader's favorite, and trending ranking. We're being beaten in all categories. One book is topping the charts. It's called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Both of you, back here now! Nico? What is it? You have a really scary look on your face right now. डरा रही है. Things just got serious. A first-hand guide to summoning spirits is an all-round hit, summarily beating the novels of the Yai Publishing House by every analysis. Just what is that supposed to mean? I worked extremely hard to promote our latest featured work, and now a rival book comes out of nowhere and steals our thunder. I have to come up with a Huh? How is this our problem all of a sudden? Paimon, please. Who wrote this book and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? Oh, am I to take it that the safety of the people of Inazuma isn't so important in your eyes after all? Wait, what just happened? Again, you technically have a point, but this feels all wrong. Nothing's wrong, okay? Come on. We're going to war. I'm going to head back and make some preparations. ये कंप्लीट हो गया. आगे सब किया क्या बात है. बट If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story?
मीको के साथ फाइट, मतलब मीको को लेके फाइट करनी है सो मेरे को। All right, Nico, we're here. So what's your plan of action to deal with this rival book? Why don't you take a guess? I'll give you a hint. It's to do with the UPI Publishing House. Oh, Paimon knows! Combine the reputation of the UPI Publishing House with the status of Guji Yai and tell everyone that the incantations in that book are dangerous! Oh, wow. Your first guess and you got it absolutely wrong. मेरे को लगा राइट बोलने वाली है। Yeah! Wait! Seriously? That wasn't it? A first-hand guide to summoning spirits is the hottest light novel right now. If we did as you suggested, we would effectively be advertising to everyone that the incantations are real. In bending over backwards trying to warn everyone about the dangers, or Okay, yeah, that would be pretty catastrophic. leaving aside the issue of the enormous manpower and resources such an operation would require, But that means there's nothing we can do. well, I've been thinking. I've read a first-hand guide to summoning spirits. It has many other good qualities besides the incantations alone. The book contains many ancient kaidan or That's right. How do you get rid of the next big thing? So what we're going to do is create Inazuma's newest hit novel. Smash our rivals' sales numbers and win our readers back. Incidentally, this will also be the best way to combat the influence of a first-hand... Wait, Miko, so you want us to write a novel? Well, becoming an accomplished novelist certainly isn't an overnight process. I did say this is what we're going to do. I trust that the word teamwork is in your vocabulary. Anyway, there is a writer submission event going on at the moment. Start by talking to readers and finding out what they're into. I'll be at Uyu Restaurant. Find me there when you're done. The key to a successful light novel is having good illustrations. When to use illustrations, what they should contain, and which artist you should commission for them. Good illustrations can make up for bad writing. There's a saying that light novels are essentially a case of buy art, get words free. The illustrations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits are incredible, but it's... हमें इन लोग से बातें करनी है। I'll be honest. I read light novel. In Opinion most लेना, traditional stories, opinion, the protagonist opinion, usually has opinion. this long and drawn-out character arc, usually involving a process of separation, loss, and ultimately growth and renewed strength. By contrast, there's the protagonist is a Last one, yeah. I've been reading light novels these days, though. The only not only is it a good... There's much more to light novels than Paimon realized. Let's go tell our findings to Yai Miko. क्या के लिए चलता ही नहीं जल्दी से।
Discord. Ah, there you are. Let me introduce the team. You've already met Junkichi and Shigeru. Hmm, 20 member हो चुके okay Discord. So, Shigeru is an experienced editor, and Junkichi is the author he's partnered with. Junkichi's working through a creative lull at the moment, but all his past works have been very popular with young people. He's developed a distinct and enduringly popular style. Satomi is Yae Publishing House's ace in the hole. Her specialty is that she can write all kinds of completely different stories and all under different pen names. As for what those names are, well, that's a trade secret. They will be teaming up with us to collectively create the novel that knocks a first-hand guide to summoning spirits off its perch. So, feeling better about my plan now? Uh-huh. It definitely makes sense. Now then, tell me what you found out about readers' preferences. All very true. An original core concept, a fast pace, quality illustrations, and lots of action. More importantly than that, even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of realism. Paimon followed pretty much all of that, but there's still one question. What are we actually gonna write about? For example, we know we need an original core concept, but how do we come up with one? Before you can answer that question, you have to understand your target audience. Take a first-hand guide to summoning spirits, for example. When I read it, all I find is common knowledge to the kitsune, but to the general public, it's bursting with new and interesting ideas. It all comes down to the size of the information gap between author and reader. As a traveler, there must be a great many things you know that are complete unknowns to the people of Inazuma. What is commonplace to you may be fresh and original to them. Oh, right! So maybe we can take inspiration from our time in Mondstadt and Lille. But that would make it a completely different genre than a first-hand guide to summoning spirits. Is that gonna be a problem? Not at all. You don't have to worry so much about how to compete with that book. All you have to do is provide some interesting ideas based on your travel experiences. As long as the core content is interesting, my expert team here will be able to flesh out the details. Alright, let's start with chapter 1 then. No one would ever go for that, no matter how you tried to play it. Out of a maximum of 10 points, I'd give that a 9. Is there really flying emergency food in other worlds? How does it taste? And how... It's a strong opening. An easy way to grab the reader's attention.
Never underestimate the appeal of culinary-oriented subject matter. Hey! Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kinds of light novels you've read in the past. Thoughts from the experts? Are we able to work with this general framework to make an interesting story? Yeah, we think it works. I tend to overcomplicate the core concept if I'm not careful, so... That's good. Okay, we're done with Chapter 1. Let's move on to Chapter 2. Huh? Won't that do for now? Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. If we don't keep delivering the goods now we've caught their attention, all our hard work so far is in vain. Hurry, Chapter 2, let's go. What's wrong with you? You don't look so good. What a pity. I thought your beginner's luck would carry you a little further before it came to this. Before it came to what? What's happened? The bane of our existence. Writer's block. It's your arch nemesis for life, appearing without warning and inflicting a pain worse than death upon the writer. They say... Sounds awful! When this happens, the best thing you can do is have a bite to eat and take a proper break. Boss, get me a plate of fried tofu, and get some kushikatsu for these two. Don't worry, this is my treat. Your treat? Oh, wait a minute. Miko, we'll be getting paid for all the hard work we're doing, right? Of course, everyone that takes part in the creative process will be paid. Alright, cool. Then let's press on, shall we? Don't give up now, for the sake of our paycheck, get your brain going! क्या चिल्लाती है? Ooh, does this mean your inspirations come back? The Lele Academy has more student clubs than you can shake a stick at. And as the new kid on the block, the protagonist is the one they're all fighting over. There's the Culinary Club, the Architecture Club, the Funerary Club, even the Coconut Milk Research Club. But in the end, the protagonist chose to join the Rock and Roll Club. Taking a chance on their youthful dreams, 4 newcomers to the Academy form a rock and roll band that really begins to take off. Paimon loves it! I give it a 9.5. A classic tale of youth and friendship. It never gets old. I especially like the head of the club. Great character design. She really has rock and roll coursing through her veins. Aw, yeah! Great. Well, now Satomi can get started on that. Leave it to me, Lady Yae. Let's write about Inazuma in the 3rd chapter, shall we? I can help with this one. We can use the Vision Hunt Decree or your experience in the Resistance. And clearly very closely based on your own personal experience. That's fine. Since it's something that took place in Inazuma, it might actually be more interesting to readers if it's grounded in the truth. One thing, though. We'll need to rewrite the part about me giving you the Omamori. Let's change it to... The mysterious Lady Kitsune teaches the protagonist a spell that can make their wishes come true. Whoa. So we're really going head to head with our rival on this one, huh? I suppose so. Once they're done writing the manuscript, I'll write the passage where the protagonist recites the incantation myself. Are we done then? Do you really think this will be able to beat a first-hand guide to summoning spirits? The content is fine. Now we just need to promote it. I will contact an artist to make some illustrations. She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. You're free to take a break while the creative team is doing their work, but please go by the Yae Publishing House at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. Welcome to Uyu Restaurant. Please talk to me if you want to order.
जाना इधर है तो मैं गेट से क्यों निकल के जाऊँ, फिर उधर जाऊँगा दौड़ते दौड़ते आते। Miss Hina doesn't usually do endorsements. With Miss Hina getting so popular lately, a lot of people have come to us hoping to do a collaboration. But Miss Hina's not interested in any of it. She still prefers to focus all her efforts on replying to readers' letters. And maybe that's why her fans like her so much. May your light novel sell well and set a new record for the Yai Publishing House. We'll do our best. आस पास में तो चल के जाएंगे, टेलीपोर्ट क्या ही करें बार बार, वो टेलीपोर्ट वाला लोगो आता है तो मज़ा नहीं आता। Are you sure you'd like to submit this entry? Let me see. The Miraculous Adventures of the Traveler by... What a strange pen name. Definitely your doing. Having been around you so much recently, Paimon's slowly starting to understand your unique tastes. What do you mean, strange? It took a lot of work by a lot of different people to get this thing finished. We'll get this printed out. Uh-oh. Paimon's getting a little nervous. That's right. Okay, then I'll sign. Thank you all for your... वेट फॉर 3 days। टाइम को बढ़ाना है क्या? तीन दिन का वक्त चाहिए इसको भी। Day after tomorrow। You've all finally made it. Good news, everyone. I just received word that your light novel is flying off the shelves. Woohoo! That's great! This level of success is an amazing accomplishment for a new work. Most new books don't sell 30% of what you've sold. I have free copies for each of you here. Please take them. Oh yeah! The whole reason why we made this light novel was to combat the influence of a first-hand guide to summoning spirits. We saw... Shh. Listen to what the people around us are talking about. Hey guys, have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from A First-Hand Guide to Summoning Spirits at midnight, and your wish will come true! Oh, that? That's a throwback. That's old news, man. No one's talking about that anymore. The Secret Spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized all the incantations. The Secret Spells of Lady Kitsune? You haven't read it yet? Okay, I heard that the incantation, they actually had to use one of that proves. Really? Well, I better go and prepare too. Well, I'd say मेरे को feeling less worried now? Wow. But Paimon doesn't remember that detail from the brainstorming session. There's a phase 2? Of course. Behind every book that hits the market lies an author, right? Oh yeah. If we leave him to his own devices, he might just write another guide to summoning spirits. Also, we... Exactly. But when we went to ask him about it, yes, this is another case of after his But the spirit... Simple. And you, my little friend? Oh, what are you talking about? The fun's just about to begin.
हाँ फाइट टाइम क्या, फाइट टाइम मेरे को फाइट ही करना था इसको लेके। Nico, what is this place? The ideal spot for a little meet and greet with a certain elusive author. Really? That seems rather fitting, considering that we are dealing with the spirits of... What are you so afraid of, honestly? Paimon's heart is pounding, but Paimon's pretty sure it's not because of excitement. Come on, in we go. Hey, wait up! Oh, Paimon's scared. Stay close by, okay? Don't leave Paimon all alone. चलो 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 चलो। इन सब का कोई काम ही नहीं है अब तो। सिर्फ उसको लेके खेलेंगे मीका को। ऐसी स्टोरी में ये क्या था, ये क्या था, FPS तो 60 आ रहे, फिर ये क्या हो रहा है। ये सपोर्टर है, मुझे लग नहीं रहा इसकी अटैक से कुछ होगा क्या। Weird painting. Miko, do you know what it's supposed to show? Probably a scene from ancient Inazuma. It's a good piece of artwork and all. Looks like the artist signed their name. Rakusai? It's not very clear. Let's go inside and take a look. मैं भी इधर से आया हूँ, पर मेरे को चेस्ट वेस्ट नहीं छोड़ना है। ये इलेक्ट्रिक टाइप है, इसका अटैक कैसे, तो इसको ये है इसके पास, ये बुक टाइप का जो होता है वेपन। शोगन को वहीं पे देखो कितना खतरनाक मारती है। Emerge. Right now. Emerge. Right now. Emerge. Right now. इसका ये अटैक भी बहुत डैमेज देता है यहाँ पे। Right here. Emerge. इसका मेरे को वो देखना है फुल अटैक। Right now. Emerge. भारत भी पकड़ गए इन लोग, ऐसी की तैसी। Wow, this place is huge. Hey, is that a mirror? There's a really weird looking stool as well. Wonder what it's for. Ah, I see. Huh. This setup is quite handy. Saves me a lot of work. All right, go and take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. मुझे तो इसमें गलत लग रहा है। और मैकेनिज्म की बात कर रही तो ये तो है इसमें। अरे मर गया रे भाई, अच्छा नहीं, मैं सोचा मैं दब गया उसके नीचे। मैं इसका अटैक इधर से भी कर देता हूँ, इनके ऊपर नहीं यूज करूँगा मैं। मैकेनिज्म है मैकेनिज्म। दो साइड जा सकता हूँ मैं, क्या इधर भी जा सकता हूँ मैं। Right now. Right here. Right now.
ना इनके ऊपर यूज करेगा। ओए मरे जा रहे थे तो कुछ No more games. Everybody stand back. मीका को अच्छी बात है स्विच नहीं किया मैं। What a nuisance. Right here. Come on out. Let's light it up. Adventure time. Off we go. I'm going in. Emerge. अबे तू कैसे फिर भी मारती? Right now. करना क्या मेरे को इतना करना क्या है? मैं उधर से भी जा सकता हूँ ना? नहीं लॉक है। इधर से जा सकता हूँ। मूव Emerge. What you got? I'm always watching. Right here. Right now. What a nuisance. ते टूटता है। हाँ मेरे को याद है। Right here. Right now. Let's light it up. Emerge. Right now. Emerge. Everybody stand back. मैं इधर से गया था वापस, मैं इधर से वापस भी आ गया। ये कंफ्यूजन जगह है ना पूरी पूरी।
painting we just saw. It's getting eerier and scarier. What is this place? Okay. Next, I will show you a secret kitsune spell. This painting is a swift summoning medium, which means I'll be able to skip many of the more tedious steps. The murky mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. Yes. The whole point of a summoning ritual is for a dead person's spirit to possess a living person's body. You saw what happened to that Oni samurai spirit. Are we positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't gonna have any lasting negative consequences? Oh, you really care about the little one quite a lot, don't you? I'm a little jealous. I wish my friends were caring like that. Anyway, are you scared, little friend? Sit on the chair, stare at the painting, and relax your body and mind. Try and be natural. There's really no need to be nervous. It's like he's sitting inside the painting. Huh? Is Paimon seeing things? Did the painting just move? Recite the incantation in your heart, little one. Also, you'll need to have some intense thoughts going through your head. A wish, for example. Now, what kind of wish do we think it would take to summon forth the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits? Anyone? ट्रैवलर तो अपनी बहन को ही मांगेगा वापस दिए. Probably something to do with writing? Very good. The wish needs to be heartfelt, though, so let me help add a little realism to the equation. The book is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need an outline for Chapter 4 as soon as humanly possible. When is the earliest that you can turn it in by? The painting is moving again! What the... I never thought the day would come when I'd be summoned using my own ritual. Getting a taste of my own medicine. What have we here? Another budding writer? What's come over you all? Why is... We got you! So you are the one who wrote A First-Hand Guide to Summoning Spirits. What are you trying to do, Why'd you put that summoning incantation in the book, huh? What's your game here? Huh? What's this? Oh, I see. No wonder this felt so familiar. I've walked right into your trap, haven't I? You ask me what my game is here? Well, of course. It was to use this incantation as a means for all the souls of the departed yokai to make their glorious return to the world and plunge all of Inazuma into a brutal, bloody war! What? Paimon knew it! You had an evil plan all along! Oh, did you now? Then how naive of you to let me possess this body so easily. I sense, yes, great power within him. Good. Good! With this power, no one shall be able to stand in my way! Wake up! Quick! Wake up! We gotta stop him! It is futile. You shall never wake him again. Hey! Come on, wake up! Don't let him take your mind! Miko, think of something! Miko!
Urakusai, you haven't changed a bit. You caught on so quickly. Too. Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what you were going for, yes? Never one to stand on the sidelines of a good spectacle, are you? Oh, look what you've done to this little flying one here. Oh, poor thing scared witless. You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now you're trying to blame it all on me? Urakusai? Miko, you guys know each other? Yes, we do. Of course we do. Allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits, Urakusai. No, wait. To be more accurate, it's Urakusai's memory. Memory? But isn't he a spirit? Ah, spirits, memories. They're just different words to describe the same thing. Something that comes from the ley lines. Do you remember that recent incident when the Rift Hounds were gnawing at the sacred Sakura's roots? You witnessed human memories leaking from the ley lines, didn't you? In life, yokai possess supernatural powers, and even when they are a shadow of their former selves from a bygone era, typically yokai memory... Indeed, indeed. I was wandering around the sacred Sakura's roots when I suddenly heard someone yelling, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." It piqued my curiosity, so I popped inside his body and wrote a novel for him. So that's how it happened. But why did you include a summoning incantation in the novel? Oh, little one. But with this incantation, they can go... But... She's trying to say that all the commotion this causes is likely to be a great disturbance to the humans. Disturbance? I guess you mean that we might leave them with some broken dreams after we leave, hmm? Oh, yes. And they might have a fever or whatever. But you know, I actually think that the most admirable thing about human beings is the way that they go out and shape their fate with their own two hands. As for those who would rather draw on external power than seek to improve themselves, it's quite right that they learn their lesson eventually. So when you think about it, we're actually doing the humans a big favor. Yes, that's what I thought too. Alright then. You finally convinced Paimon. You guys were right. What are you scared of, little one? Don't be deceived by her day-to-day antics. Miko is actually one of the most powerful yokai out there. Not only that, Urakusai, but... Of course. You were never one to make extra work for yourself where you can help it. And you were always the one to pick a quarrel with me when we all used to gather around and share stories. All right. You win, I lose. Happy? I finally get to hear you say it. I remember when you were just a little girl, always hanging off my shoulders. Oh, Urakusai, how much time do you have left? Not much. That goes for all of us, actually. We've all got to go back where we came from in the end. Everyone's quite content in many ways, but they still can't help but ask, are we ever going to have another Hyakyako? Don't you worry about that, Urakusai. Arrangements are being made. When my bell rings, it means the moonless night is upon us. Great. Wonderful. Fantastic. Miko, it's been nice catching up, but I'd better conserve my energy if I want to stick it out until then. So, I'll be on my way now. All right. Goodbye then, Urakusai. One last thing, Miko. I just want to know, have you been well all these years? I've been great, of course. Every day is a happy one. Especially these days. Not only do I have my light novels, but I've also met these two delightfully nosy outlanders. And even A is finally starting to come to her senses. Quite a miracle, given how pig-headed she can be. Oh, well, great. That's fantastic. Urakusai, you'd be right at home in this era. A great storyteller and artist like yourself would be the...
there. Here, like last time, repeat after me. Oh, you beat me to it. Looks like your brain is intact. So, your first possession, What was it like? Good. Saves me from having to explain everything again. Hearing Rakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood. In return, it's only fair that we make sure to deliver on what they're all hoping for. Yes, though they only represent a tiny proportion of the memories in the ley lines, since you've come this far, why don't you do one last thing for me, You cannot be serious, Miko. After all that, you still have more errands for us? Huh. You guys teamed up to scare Paimon just now. If you think Paimon's gonna do anything you ask for, think again! Aw, come on. I'm really only asking you to finish what you started. Paimon's paycheck? Well, there's no way out now. We're in too deep. Well, hello there, my little helpers. So nice of you to join me. As if we had a choice. We just want our paychecks. So, Miko, what exactly do we have to do to make this Hyakyako happen? Also, to be clear, we actually have no idea what it even means. It might sound ominous, but to put it simply, the Hyakyako is just a gathering of the yokai. Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink, one by one they'd start soaring into the sky with their yokai powers. There were so many of them that their silhouettes would block out the moon. But now, the yokai memories that leak from the ley lines are weak. They are no longer able to fly. So I will be performing a convocation ritual for them, gathering all the wandering memories together in one place. When the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will be satisfied and return to where they belong. All the preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the incantation and the mention of moonless night that I added to our novel? Oh, yeah! Something about reciting the secret. That's the one. Actually, it's not a wish-granting incantation at all. When that time comes, let's all pitch in and help send them on their way. I will start the ritual preparations shortly, and at first, tell the shrine maidens to leave the mountain. During the Hyakyako, a whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. After that, I will commence the ritual, and the memories will begin to congregate. The memories are normally dispersed and don't pose a threat,
They may see this as an opportunity to try and make it up the mountain. Alright, got it. Then what? Well, if at that point you felt like coming to the shrine and getting a close-up view of the yokai, I wouldn't say no. Okay, let's get going. Descend the mountain? Are those Lady Kuchi's orders? Yep, Miko said the ritual she's gonna perform soon might pose a physical danger to you all. I see. I'll evacuate everyone right away. What about you? We'll be taking care of a couple other things for her. And once we're done with that, we're gonna come back and do the ritual together. It seems like Lady Kuchi places great trust in you. Lady Kuchi's never allowed anyone else to be in her presence when she's conducted rituals like this in the past. Thank you for helping with the ritual, and good luck. Don't worry, we're much stronger than we look. Miko's about to start the ritual. Come on, let's go deal with the monsters down the mountain. These monsters look really riled up. Yep, let's get rid of them as fast as we can. Then we... Alright, here they come! Time for a light show. A festive reprise. By royal decree. No rest for the wicked. Strike is one. मर गया क्या Same मैं? character. Midnight Phantasmagoria. I summon thee. दो होने के कारण ये लोग Here come the fireworks. सीन क्रिएट कर रखे हैं। Teamwork is dreamwork. That's gonna hurt in the morning. Oz, reveal thyself. Flag fly and step. Fire hazard. कब तक शील्ड रहेगी तेरी? Time for a light show.
अरे पहले इस नमूने को मार दो, ये सबसे ज्यादा दिमाग तेज करता है। Off we go. Adventure time. Yeah. Off we go. Everybody stand back. Fire hazard. Odd, reveal thyself. Midnight Phantasmagoria. By royal decree. Light blade. Let's light it up. Going somewhere? I'm going in. More. Adventure time. Light blade. Odd, reveal thyself. Unleash. Here come the fireworks. Fuse is lit. Perfect distance. Your grand finale. By royal decree. Firehead. There's so many of them. Come on, you can do it. Go Bishop 2. Why do they never miss? Everybody stand back. As you wish, maid Fräulein. More. How's the theory? Watch your step. I'm going in. I dare you. Odd, reveal thy. Allow me. It's like thunderbolt back. A super freeze. Fire hazard. Alright, that's the last of the monsters. How far along do you think the ritual is? Let's head back to the Grand Narukami Shrine and take a look. So many! They're everywhere! Huh? Yes, the memories of the yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. You all right, little one? You look a little nervous. It's just, Hyman's never seen anything like this before! Whoa, they've really blocked out the moon!
It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. Do they really have to go? It's a feast, and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, why don't you do the recital along with me? O Hakushin, cause of this enchantment, in reverence I perform this rite. In reverence, I perform this rite. To be a guiding light. Wow, so beautiful! Look! Lights are coming from Inazuma City! The book says, recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. O Hakushin, cause of this enchantment. I perform this rite to be a guiding light. Your unrivaled power will be honored eternally. Murakusai, you asked if I was doing well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now, I can't help but feel a little lonely. Just a little, of course. Just as I thought, the ritual went very smoothly. Thank you both. Oh, I'm great. But the look on your face just now... I'm fine, seriously. Really, No. Honestly, you two. Pico... Fine. Well, if you're dead set on doing something for me, you can treat me to a meal. Sure, no problem. A meal it is. Okay. Well, see you soon then. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Today is the day we agreed to treat Nico to a meal. The venue is Uyu Restaurant. Let's go! He stays safe.
एम के बिल्ड तो दिखा सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ, रुको। ये देखो मेरा भी ये सीन है, सिस्टम है। अब मुझे नहीं पता इतने पे बिल्ड कहलाते हैं, इसको क्या कहलाते हैं, देखो जरा। बताओ, अच्छी है, बिल्ड की है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत बस। अभी आर्टिफैक्ट्स नहीं है मेरे पास, आर्टिफैक्ट्स तो देख लो। अच्छा है, मीडियम है, क्या सीन है, बताओ बताओ। इतना ही अभी तक मेरे से बिल्ड ही हुआ है। और इसके डिटेल में इसका क्रिट रेट अभी 48 है, क्रिट डैमेज 148 है, ऐसा सीन है। MK666 MK बढ़िया है नहीं बढ़िया है, कुछ कमेंट तो करने दे भाई, कैसे पता चलेगा। लगाओ क्रिट। और अभी मेरे पास आर्टिफैक्ट्स नहीं है ना, मेन मुद्दा तो ये है। आर्टिफैक्ट दिखाओ, ये देखो हमारे पास सस्ता आर्टिफैक्ट्स है अभी तो, जो है उसी से काम चला रहे हैं अभी तो। ग्लैडिएटर 2 पीस अटैक है, एक एक दिखाओ जैसा। ये देखो क्रिट रेट, क्रिट डैमेजेस के अंदर एचपी है, एचपी में नहीं, ये दो चीज़ ही देख के चलता हूँ। और अटैक के अंदर क्रिट रेट, क्रिट डैमेजेस में भी। और इधर मैंने इसको अटैक दे रखा है, ग्लैडिएटर अटैक, इसमें भी क्रिट डैमेज है, क्रिट रेट नहीं है। इसमें पायरो डैमेज बोनस है, इसमें क्रिट रेट का दे रखा हूँ मैं इसको। क्रिट रेट तो मैं भी भी नहीं किया। और कोई मिनट, मेरे पास इधर अच्छा पीस नहीं है तो मैं इसको क्रिट रेट जो मेरे को मिला वो दी थी मैं उठा के। थोड़ा सा क्रिट रेट बढ़ा है। और वेपन की बात रही, वेपन देख फर्स्ट सेकंड तो सही है, क्रिट रेट क्रिट डैमेज है दोनों में। वेपन देखना है तो बताओ, इसका वेपन दिखाऊं मैं कौन सा है। ऐसी बात है क्या। ये है वेपन, थंडर पल्स। थंडर पल्स क्रिट डैमेज मिलता है हमको इसमें 60%। पता है। मैं इसको अपग्रेड नहीं किया, ये क्या बोलते हैं एमस वो है, इसको 60 पे रोक दिया, मैं इसको अपग्रेड नहीं किया। टैलेंट, टैलेंट में दोनों 5-5 है, क्योंकि मेरे पास बुक्स की वो जो ये आता है डोमेन नहीं है, जिसका अनलॉक नहीं है। कल मैं फार्म किया था ये, तो कल मैं 5-5 किया दोनों को, और इसको 2 किया। मैं इसको ऊपर बढ़ाऊंगा नहीं आगे, ये किसी काम का नहीं है इसका। बस्ट ये 2 ही बढ़ाना है मेरे को आगे, इतना पता है मेरे को भी। आर्टिफैक्ट्स फार्म करना तो है मेरे को, पर कैसे कैसे फार्म करें। आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो मेरे को 2 आर्टिफैक्ट्स मिले थे, 2 आर्टिफैक्ट्स। मैं ऐसे ही क्या बोलते हैं, ये रहा पहला, ये पहला आर्टिफैक्ट्स मेरे को मिला था, फार्म किया था जब मैं। इसमें क्रिट डैमेज मिला है, कोई मतलब नहीं है।
इससे अच्छा तो मेरे उस पहले से पीसीस पड़े थे नॉर्मल वाले। और मेरे को क्या मिला दिखाता हूँ। ये हाइड्रो डैमेज बोनस मिला है मेरे को। कितना है, रुको मैं आया आपके। अरे नहीं, 1 मिनट रुको, मत आओ 1 मिनट। मैं स्टोरी कर रहा हूँ, ये लास्ट पार्ट है तो मैं मीका की स्टोरी कर रहा हूँ। ये कंप्लीट हो जाए, होने वाली है, उसके बाद आओ। ये मीका की स्टोरी ख़त्म होने दो, उसके बाद आना। ये जस्ट ख़त्म होने वाली है, बस लास्ट सीन चल रहा है अभी। ये इसको ट्रीट देना है खाने की, मतलब खाना खिलाना है इसको, तो उसके बाद हो जाएगा ख़त्म। 60 प्रीमो जेम्स इससे भी मिलेंगे मेरे को। How is the next chapter of the miraculous adventures of the traveler not released yet? It was quite a surprise when the moonless night finally came. Yeah. फार्म सिर्फ बॉस को मार के बॉस से मिलता है ना, सिर्फ ये तो। But then nothing happened after I made a wish using the आर्टिफैक्ट्स बॉस से ही मिलते हैं ना, 5 स्टार वाले जो भी रहते हैं। Yeah. I guess like novels are just fiction after all, huh? That night was definitely the nail in the coffin for the incantations from novels fad. Huh? Paimon can't see Miko anywhere. कौन से मिलते हैं? हाँ तो आना अभी थोड़ी देर में, तब बताना किधर है। Maybe she went inside already. Let's head in and look for her. बस ख़त्म होने वाला है ये तो। इतनी देर से कंप्लीट कर रहा हूँ मैं इसको, जब से स्ट्रीम चालू है। Ah, my little friends. There you are. करो। Miko, what is this? You started eating without us? I did, yes. You're paying after all. The thought of being able to eat the most expensive dishes फायदा and उठा drink लिया the इसने तो। finest sake, all for absolutely अरे free. जंगली का क्या? I just couldn't wait any longer. अरे जंगली कैसे निकालूं मैं, मेरे पास तो See these two प्रीमोस ही faces नहीं है। here? Remember them. They're the मतलब ones VCC picking up नहीं the है। bill later. Alrighty. What's gotten into you? Come on, sit yourselves down. ट्रीट के लिए इसको बुलाया और इसने अकेले के लिए खाना खा लिया, पैसा मतलब पैसा दे रही। You have to try this fish. It's found exclusively in the waters around Seirai Island. They shipped it to Inazuma overnight, and it was still alive right up until I ordered it. Or maybe you'd rather try this? I know. I normally can't bring myself to drink sake this expensive either. हाँ मैं इवेंट तो कर ही रहा हूँ उसका, If you don't drink alcohol, जो भी आ रखा है। मतलब मैं फर्स्ट किया हूँ, फर्स्ट उसका स्टोरी जो किया है सुमीरो का, और कुछ नहीं किया। डेली मिशन जो भी उसके आते हैं वो करता हूँ बस, खत्म। Strange. I remember no such thing. Oh, so what? You did offer to treat me to a meal, didn't you? Anyway, I am something of a VIP, you know. Wouldn't you find it embarrassing to treat me anything short of lavishly? Miko, this meal is going to be super expensive. Aren't you afraid we won't be able to afford it? Oh, don't you worry about that. You can most definitely afford it. They're still printing your light novel by the batch, you know. You have quite the generous payment due. What? Oh, darn it! She tricked us into this! Miko was after our Mora from the very beginning! Oh, the looks on your faces right now. Too perfect. पूरी स्टोरी में इसने मजाक ही बनाया Oh, सिर्फ। by the way, since nobody's wishes came true on the moonless night, novels with incantations are no longer in vogue. So you'll have to come up with something new for the next chapter of The Miraculous Adventures of the Traveler. The deadline is looming. I'm counting on you. हो गया कंप्लीट।
60 प्रीमो जेम्स के लिए मैं इतना किया इसको स्टोरी को। चलो चलो आखिरकार ख़त्म कर दिया मैं स्टोरी। ये क्या होता है 60 FPS तो है इतना, मतलब ये भी गलत सीन है इसका। मैं फिसेल को ये दे रखा हूँ इसका वो थोड़ी ग्राफिक कम कर रखा हूँ, मेरा आईपैड लोड उठा नहीं पाता उतना। कौन से डोमेन में जाने से मिलता है इसका आर्टिफैक्ट्स? देखता हूँ स्केयर है, इसको भी बुला देते हैं। नहीं है, ऑफलाइन है। ये कौन है भाई बिना नाम वाला लौंडा? नाम ही चेंज कर इसमें हटा दिया। सोगंद रुको आ जाओ तो। बस उसी डोमेन में जाना है जिधर इसका सिर्फ मिलता है, सिर्फ इसी का। तो डोमेन का नाम आ जाओ फिर, चलो पता नहीं किधर है वो डोमेन इसमें। ये तो भी रिसेंट वाली है। तो बुक में भी देख सकता हूँ क्या? ये रहा। हाँ जाओ साथ में चलेंगे, ऐसे तो जाके मर जाऊंगा मैं, फायदा क्या है। वर्सेस 190 क्या ओपन देखता हूँ। हम्म 90 है। डोमेन का ही नाम लिख के जाओ बेनी। अरे डोमेन में जा क्यों नहीं पा? अच्छा भाई सही, एक डोमेन के अंदर जाने का क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन? मैं बैनिट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं बैनिट ही यूज़ करता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाता है इसलिए।
पर मैं चेंज क्यों नहीं कर पा रहा बैनिट को? अच्छा तुमने भी ले रखा है। अब यूज़ कर सकता हूँ बैनिट। और ये और मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं यूज़ करूँगा। जोंगली 89 लेवल। Let's go find some treasure. गानियो देखते हैं, जोंगली नहीं निकलेगा गानियो तो निकल ही जाएगी, क्योंकि एक बार हारूंगा मैं तो गानियो निकलेगी, नहीं आ रहा तो जोंगली निकलेगा। तो पता चला बीच में रह गया तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो जोंगली के करते करते आखिरी दिन में गायब, और मैं गानियो पे गया और गानियो भी आ गया। एक मिनट, मेरा ये चैट क्यों हट गया? एक मिनट बस। स्ट्रीम पे ये दिक्कत है, चैट हट जाता बार बार। Let's light it up. 8000 का डैमेज तो मैं दे ही देता हूँ, क्या बात है। अबे ये रिकवर क्यों कर लिया इन लोगों ने? Everybody stand back. Time for a light show. Cool the ship down. Must press on. अबे ये कैसे? I will have order. I'm going in. अरे मेरे बाहर में रहना था। Here come the fireworks. बैनिट के साथ में रहना चाहिए था। You're way behind schedule. क्या निकलेगा? कोई नहीं, मिले तो कुछ अच्छे। फिर डैमेज मिल जाता है, अच्छा डैमेज रेट का ये बात। नहीं देखा, बैनिट कंटिन्यू करो। ऐसे क्यों दिखा रहा है? पास में रहना और दिखाई नहीं देगा तो भी तो यूज़ तो होएगा ही। फिर सेल के लिए मिल गया इलेक्ट्रो डैमेज बोनस, क्रायो डैमेज बोनस भी है मेरे पास। भी मैं स्टार्ट कर देता थोड़ा थोड़ा और तो इधर रहने का। Everybody stand back. बस इधर। अरे इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। Gather. यो मेरे पीछे पड़ गया आरामी। Please, step back. मरूंगा तो नहीं इतनी जल्दी में। Order guide you. Solidify. The festival. अबे कहाँ चला गया था ये? बड़ा आरामी लौंडा है ये। Teamwork is dreamwork.
जब उससे वो मैं उल्टा क्यों जा रहा हूँ, हद है। मेरे को उधर जाने था, मैं भाग इधर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। इसको नशा करते हैं, नशा। क्या मिला? HP दे के इससे अच्छा कुछ अच्छा दे देते जो इसके काम में आ जाता। HP छोड़ के पायरो डैमेज और क्रिट रेट देते। क्रिट रेट क्रिट रेट हाँ, मेरे को कौन किया है? ये लोग क्या शौक मना रहे क्या? एक मिनट में भी चैट नहीं देख रहा हूँ, रुक जाओ बस। देव भर दियो इसकी, ऐसी की तैसी करती हो। नहीं, मर गया। एक बार और मारेगा हाथी का बच्चा। थोड़ा डैमेज तो मेरे पास भी है, थोड़ा सा। अबे मत मार इतना मेरे को। बैनिट के उसमें ही रहूंगा मैं, इतना भी कर ले। ये मर गया, उसको पकड़े हो। इसको तो बैनिट से देता मैं ले। बैनिट का भी अल्ट पूरा हो गया फुल। मर जा। ये ले बदला देगा। स्ट्रीम ऑफ। स्ट्रीम कैसे ऑफ हो गई? स्ट्रीम ऑफ नहीं हो सकती है। स्ट्रीम कहाँ ऑफ हो गई? ऑफ है क्या स्ट्रीम? हेलो, मेरे में तो चल रही है। चाहिए तो, पर स्ट्रीम चल रही है तो बोल रहे स्ट्रीम ऑफ हो गई। मैं सोचूँ वही वो गलती से हो जाता होगा कभी तो। ये डिफेंस देखने का मतलब नहीं। तो से वो आ सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऐसी वो कंटिन्यू करूँ। मेरे को वो नहीं पता है कि मतलब क्राफ्ट कैसे करते जाके, उनके लिए क्या लगता है। और कुछ और भी है क्राफ्ट करने का। एक काम कर दे, डोमेन से एग्जिट मारे क्या उधर जाके वो देखे। एक मिनट, डोमेन से एग्जिट मारता हूँ। एक चीज मेरे को पूछना था इधर, एक चीज पूछना है। ये डोमेन के अंदर किले किले क्या कहाँ?
नहीं ये मेरे को ये पूछना है, 1 मिनट। किधर है हम लोग? इधर देखो, क्राफ्ट वाली जगह पे जाता हूँ। 1 मिनट में एक चीज़ दिखा के पूछता हूँ। मेरे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर मेरे को दिखाता हूँ मैं। इधर नहीं आना, क्राफ्ट वाला टेबल इधर है। ये किस काम में आता है? ये कई चीज़ के काम में आता है? और हम इसको सिर्फ 2 ही क्यों क्राफ्ट कर सकते हैं भी? ये रीजन से बनता है। अच्छा जी, इससे होता क्या है? पर फायदा मतलब फायदेमंद है क्या कुछ, या फिर खराब चीज़ है? क्या होता है इससे? और इधर इतने सारे आर्टिफैक्ट्स के बॉक्स पड़े हैं, मैं इसमें क्राफ्ट कैसे करूँगा कोई चीज़? कौन सी चीज़ में क्राफ्ट करना चाहिए, क्या मतलब नहीं पता मेरे को। अच्छा ऐसा क्या? तो फायदा क्या है फिर उसका? जैसे इनमें से किस में क्राफ्ट करना सही होगा, ऐसा कुछ है क्या सीन? या किसी में भी क्राफ्ट कर लो काम में आ जाता है ऐसा? क्या सीन है इनका? इनसे मेन में किस मतलब किस में क्राफ्ट करना चाहिए ऐसा? किसमें? अब मेरे पास इतने पीसीज हैं अभी। 4 पीस नहीं होता है क्या क्राफ्ट? अभी मत करो। हाँ मैं भी कर नहीं रहा हूँ, मेरे को पूछ रहा हूँ मैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, क्या सीन है। और इसका मेरे को कुछ नहीं पता। टैलेंट अप करने के काम में आता है इतना पता है, और मेरे को ये भी नहीं पता। और ये बोले थे ये भी मैं आ गया है, पर इसको भी कैसे करेगा मैं क्राफ्ट? सब सीन ही गलत है अभी। अरे 55 के बाद करना, 55 के बाद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी खोपड़ी खोलने की है? इसका सही है, इसका कभी एम काम करता है कभी एम काम नहीं करता है। अभी कौन सा डोमेन अच्छा रहेगा खेलना, क्योंकि वो 90 के बाद ही सीन सही है इसका। Benny's adventure team, assemble! अभी इसको अपग्रेड करना है मेरे को 90 पे, पर 90 के लिए मेरे को ये 20 चाहिए और ये
तो क्राफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Fireworks are for now, but friends are forever. इसको 80 पे ही छोड़ दोगे, अभी 90 नहीं करूँ। Let's go find some treasure. वेपन टैलेंट, हाँ तो दोनों ही आज नहीं है ना, दोनों ही बंदे आज के। Benny's adventure team, assemble! ना ही हम वेपन के लिए कर सकते हैं आज, और ना ही टैलेंट के लिए कर सकते हैं। टैलेंट वाला कल था, कल मैं किया था। Have you ever kept goldfish as pets? यार They're 50 के very बाद cute. ही होगा 90 भाई। वेपन का है क्या? वेपन का डोमेन तो है। वेपन का है तो गोल्ड चाहिए ये। चलो जरा वेपन वाले पे चलो। वेपन का है तो 90 होगा, तो वेपन पे चलो। वो बना लूँ क्या? पर उससे होता क्या है मेरे को ये नहीं पता। अगर मैं उसको बना लेता हूँ तो यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ कैसे करेंगे उसको? बना तो मैं लूँगा जाके, 2 बनेगा एक दिन का। एक बना के ट्राई कर लेते हैं, एक बना लेता हूँ। इसको बनाना है ना, एक बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये चाहिए, 40 ये चाहिए, 40। बनाऊँ या ना बनाऊँ ये बताओ। 140 ये लगता है, जिसमें मैं डोमेन में 2 बार में कर सकता हूँ कलेक्ट जाके। बनाओ। हाँ, एक ही बनाऊँगा सिर्फ। अब इसको यूज़ कैसे करना है? बना तो मैं लिया। आज का बच्चे डोमेन में ऑप्शन आएगा। अच्छा चलो डोमेन में चलते फिर। ये था ना? अभी मेरा फिनिश्ड, मेरा फ़ोन बंद हो जाता है पता है, स्ट्रीम चलते चलते अपने आप ही। और मेरे को लगता है मेरा स्ट्रीम बंद हो गया इसकी वजह से। व्हाट्सएप कॉल, हाँ 1 मिनट। व्हाट्सएप पे पर वॉइस भी कम आती है। इंस्टा दिया था तुमको। रुको। एक मिनट, हेडफोन हटाने दो मेरे को। हेडफोन। वो बोलो। मतलब अच्छा देगा ना तीसरी, अगर अभी नहीं दिया तो
हाँ वो तो सही है, मतलब जाके अंदर सीधा यूज कर लूँ ऐसा कलेक्ट करने की जगह पे। हम्म। Wow. Where did that come from? अच्छा, तो मेरी तो वो भी बची हुई है ना अभी, क्या बोलते सोगन। सोगन, हाँ मैं उसका कर लिया, सोगन का भी कर लिया, आज मीको का भी कर लिया। मीका, मीको, हाँ हो चुका है उसका अनलॉक। इसको कंप्लीट कर, सोगन के बाद उसे जाने पे मर ही जाऊंगा फायदा क्या। Everybody stand back. Go for some down. This is long overdue. हम्म। उसका उसका अटैक वैसे भी सबको लगता है यार, जब वो अटैक करती है। Here come the fireworks. For Rex love. जोंगली रखना पड़ेगा किसी को अपने बाद। ऐसा Killed. Nice and spicy. इसके पास जोंगली है और वो है क्या बोलते हैं, दोनों जो आने वाले सब कुछ है। मुझे तो, मैं तो उम्मीद ही छोड़ रखा हूँ, मेरे को तो नहीं मिलेगा। मेरा भी इसमें ऐसा ही किस्मत है, पिछली बार भी उस पे मिला था 70। मेरे को लगता है ना वो तो। मेरे को एक सिल्वर मिला और 5 मेरे को मिला, 6 ये मेरा सिंपल है। वो यूज कर लिया मैं। इसको छोड़ दूं मैं भी। मारेंगे, अकेले मार थोड़ी ना पाऊंगा मैं उसको। किधर है वो बॉस? इसी का ना सिर्फ वो जो बॉस ना था वो है सामुराई वाले पे ना। हाँ जिसमें गया हूँ, जिसमें 90 वाला खुल रखा है। टैलेंट 5-5 है उसका, डैमेज फिर भी जा रहा है अभी 5000 6000। पानी वाले को जाके मैं मारूंगा तो उस पर जाता है 13000 ऐसे समथिंग। बैनेट ले लें इधर हम।
ये मेरा फिर लाइव स्ट्रीम का वो ग्लिच हो गया, चैट ग्लिच होता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ जल्दी, फ़ोन का ये दिक्कत है। हाँ मतलब देखो चैट भी इसी में तो फ़ोन तो इसी से आता है। मैं ज़्यादा मतलब वॉइस नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, ये इंस्टाग्राम का सीन है आपको। पीछे से तुम्हारे हाँ सही है, नहीं तो कौन मेरे को इस कितना है, रुको देखना तो मेरे को 60 है मेरे पास, 40 का बनेगा मेरे को, या तो एक करके फिर बना लेंगे दोबारा जाके। इसके अंदर वो आता है ना बॉस। Teamwork is dreamwork. Time for a light show. Adventure time. 2 महीना। Why do they never miss? Benny's adventure team. I have failed you. मैं अभी भी नोटिस किया कि वो बंदा तो निकलेगा वहाँ से और मैं बैठ रहा हूँ अकेला अकेला। अरे भाई मैं लीव कर दिया वही क्यों भाई, क्यों गरीब के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम लीव कर रहे हो। रुको वो क्राफ्ट करके आ ही जाता हूँ मैं जाके। मैं वही सोचूं लीव, वो लीव वहाँ अंदर जाके लीव कर दिया था अद्धे, तो मैं फंस गया उसमें। अभी है ही नहीं कोई, वो बेच रहा था, मतलब मेरे को जब बेच रहा था, जबकि क्या मैं स्टोरी कर रहा था। ये हो गया। उधर टेलीपोर्ट मार रहा हूँ। और कोई है नहीं, रुको जरा देखता हूँ कोई आता है क्या। वैसे क्या अंदर जाके पता है मैचिंग, हाँ पता है डैने ट्रक लूँगा मैं पहले। वैसे में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। Shine down. मैं बैनेट लगा लूँ, सबको वो देंगे। अच्छा मेरा बैनेट मर चुका है, सही है, फायदा क्या बैनेट का। ये लेके आया जरा। किसको है ना, एलिमेंट मास्टरी कमी नहीं है अपने पास। आर्टिफैक्ट्स में भी एलिमेंट मास्टरी है अपने पास, तीनों में। कौन छूट गया अरे नहीं, वो ग्लिचों के अंदर आ गया, मेरे को लगा छूट गया बाहर। मैं दूर ही रहूँगा, ये लोग मार देंगे। मैं गया, मैं मारा तो फायदा नहीं है फिनिश देने का।
मेरा भी डैमेज 5000 का, वो देखो मेरा दिख रहा नंबर 5000। अरे मर गया मैं इसीलिए मैं यही बोल रहा था मैं मर जाऊंगा। कैसे छोड़ दूंगा तो मतलब मैं वापस रिस्पॉन हो जाऊंगा क्या उधर, ये लोग खत्म कर देंगे तो? हाँ वो तो खत्म ही कर देंगे, ऐसे छोड़ देता हूँ। ये लोग मर गए या लीव कर दिए, मेरे को नहीं, कोई नहीं दिख रहा। क्या बंदे इतनी आसानी से मर गए लोग। एक काम करते पूरा इधर से लीव करो, दोबारा से बनाते। मैं अपना बैनेट लेके ही सही हूँ इससे तो। ये रैंडम्स मतलब जो भी आए इतना घटिया लोग थे, पहले लेवल इतना था उसने उसकी इज्जत खत्म कर दी। मैं एक हाथ से मैं अपना वो पकड़ रखा हूँ, क्या बोलते हैं, डिवाइस, क्योंकि इतना स्लो वॉइस आता है ना तो उसमें कोई सीन ही नहीं है। ये क्या कोई कॉल कर रहा है क्या? नहीं, एक काम करो, नहीं तो तुम आ जाओ, क्या दिक्कत है? कौन टू नहीं तो ये मार देगा अकेले के लिए भी अगर गया तो फिर डोमेन में। इसको मैं बैनेट लूँ पहले तो, बैनेट 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 की तेजी अब वो राक्षस की औलाद ऐसे ही मारता है ना। बड़े वाला पागलों की तरह स्पैम करता है जमीन के ऊपर, हाथ ही मारेगा 3 बार खत्म सामने वाला। पूरा जंप क्या मारता है वो, जंप मार के सीधा सर पे। अभी भी तो उसने मेरे को ऐसे मारा, उससे पहले देखो बैनेट को मार दिया वो। बैनेट अभी मरा ही हुआ था, फिर रिकॉल किया उसको। जंगली की शील्ड तो टीममेट को भी मिलती है ना, तो ये इस्तेमाल करता है, मेरे को नहीं मिलती है। अच्छा ये देखो मैं उसको क्या मार रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रो को, पर कोई मतलब नहीं, वो हो गया। कहाँ ऊपर हवा में उड़ता है। मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के मारूंगा, उसको आइस पड़ रखा है, वो उस पे अटैक मेरा भी जा रहा है इतना अच्छा। कहाँ मार रहा हूँ मैं, इसको पकड़ो, ये ले ये ले। उन लोग से अच्छा तो हम दोनों की टीम है, वो जो 2 आए थे मर गए 2 की 2। डबल मिला HP ला इसमें, HP है। ये अटैक पे ये कौन सा, 2 HP है। ये बीच पे तो ये नहीं
की बारी की बच्चा ही है मेरे को। क्रिट उसमें क्रिट डैमेज है, क्रिट रेट था, मैं ध्यान नहीं दिया। आया तो जंगली को। कल भी मेरा बेकार ही गया था पूरा। नहीं, कल तो टैलेंट फार्म कर लिया था। टैलेंट कल 5 किया था मैं इसको, याद है। ये क्या है, ये लोग बग्स हो गए क्या, एकदम घटिया लोग। रानी तो पहले पड़ा हुआ है। मेरे को दोनों ने भर दिया पकड़ के। ये घटिया लगता है ना, वो जो दूर से करंट मारता है इसकी। मैं बच रहा हूँ अभी तो। रेड वाले पे मेरे को तो पता ही नहीं, मैं सोचा वो क्या नाम है, ऐसे ही है सॉफ्ट के। मेरे से कोई मिला एनर्जी चार्ज के अंदर। अच्छी है, अच्छी यार। वो एचपी आके कुछ करोगे तेरे पास वो करता हुए ये। देखें हमारे पास क्या क्या आ गया है। वैसे क्या ही आया होगा, पर देख लेता हूँ। आर्टिफैक्ट्स किधर है। हाँ, पहला एचपी मिला है। ये तो एचपी वाले में तो तीनों ही मिला हुआ है। रुको देख रहा हूँ। इसमें अटैक में मेरे को ये मिला है, इसमें ये मिला है। ये मिला था देखो मेरे को, क्रायो डैमेज बोनस, इसी के अंदर से थोड़ी देर पहले। और ये हाइड्रो डैमेज बोनस मिला था मेरे को। नहीं, 5 स्टार में ये मिला था मेरे को, एलिमेंट मास्टरी। लॉक कर लो इसको। और ये क्रिट डैमेज मिला मेरे को इधर। ये भी लॉक कर दो, क्रैव डैमेज 5 स्टार। हाइड्रो डैमेज और ये देखो, ये देखो, ये 2 मिले थे। वही। ये इसमें इलेक्ट्रो डैमेज में मिला था, ये 3 स्टार। Fireworks are for now, but friends are forever. It's so nice to de-stress. ये ना जिसमें क्रिट डैमेज है, क्रिट डैमेज एनर्जी रिचार्ज अटैक। हाँ, तो ये डिफेंस वाला अनलॉक करके इसको यूज करोगे, बताओ। यूज करके देखो क्या मिलेगा मेरे को।
मेरे को उसमें देखता हूँ पहले। If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? वही मारा हूँ। वही मारा ही हूँ मैं। ये दे दूँ इसको एचपी में, जो मैंने इसको दे रखा है, क्या नाम है, केली को। ये देखो, कुछ नहीं मिला है। ये डिफेंस एचपी कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, अटैक नहीं है उसमें। इसमें भी डिफेंस है, इसमें क्रिट डैमेज है और अटैक है। पर उसमें मैं पहले से क्रिट रेट दे रखा हूँ ना। ये देखो, Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? अब बैनिट का क्या सीन है? बैनिट, Are for now, but बैनी। friends are forever. आधे से ज़्यादा मेरा तो सारा वही मिला है एचपी। मैं ये क्राफ्ट किया था, कहाँ गया ये वाला पीस? मेरे को क्राफ्ट से मिला है, पता है। ऐसे ही चेक करने के लिए गया था कि क्या मिलता है मेरे को, और मैं बेकार एकदम तो उसको क्या था, इसमें मेरे को क्रिट डैमेज और ये मिला था, तो मैं इसको बूस्ट किया। हाँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ। मैं उससे करता ही नहीं हूँ, इन सबको भी कर दूँ ना लॉक। हाँ, मैं पत्थर के पास नहीं जाता हूँ, मैं स्टोरी में बिजी रहता हूँ। मैं इधर से उधर अरे मैं जाता ही नहीं हूँ उसमें, पता नहीं। तो उसी में जाकर घूमना पड़ेगा लग रहा है। Fireworks are for now, but friends are forever. Osmanthus wine tastes the same as I remember. इसको क्या देना था बोल रहे? नूबलेस है क्या मेरे पास कुछ भी? चेक कर लेता हूँ है क्या कुछ, वो बोल रहा था। मेरे को तो नहीं लग रहा है ये रहा एलिमेंट मास्टरी है। क्या करूँगा इसका मैं? कौन सा एलिमेंट मास्टरी? Kept goldfish as pets? They're very cute. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Leo. मैं इसको एलिमेंट मास्टरी है इसमें। So it is where many things come to settle. ट्रैवलर को ना, अरे उस पे ही था ये, ट्रैवलर से ही मैं छीना हूँ। ये रहा, इस पे फिजिकल डैमेज बोनस था, पर मैं इससे भी ये छीन लिया। मैं बता अब कुछ नहीं दे रखा हूँ अभी, मेरे को पता नहीं है क्या सीन है इन लोग का, तो इसलिए। ये रहा हाइड्रो डैमेज बोनस, हाइड्रो है ना ये,
हाइड्रो है ना ये? नहीं एनिमो है, हाइड्रो का स्विच मारो पीछे। मैं इसके ऊपर ज़्यादा वही नहीं किया हूँ अभी तक, मेरे को इसको अपग्रेड करने में झंझट है। I have a few references. ट्रैवलर के लिए सही है, ट्रैवलर का मेरे पास सारा एलिमेंट मास्टरी के साथ ही है। Have you ever kept goldfish as pets? They're very ये रहा cute. ट्रैवलर के पास एलिमेंट मास्टरी की कमी ही नहीं है। ये देखो ना, पहला ये इसमें क्रिट रेट क्रिट डैमेज है इसमें, दूसरा इसमें भी क्रिट डैमेज क्रिट रेट है, तीसरा इसके अंदर भी क्रिट डैमेज है, क्रिट रेट नहीं है इसमें। तो बोले तो इसमें क्रिट रेट है अटैक में, इसमें क्रिट डैमेज है। तो ज़्यादा बढ़िया तो नहीं, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता इसको। एलिमेंट मास्टर इसका 600 इतना है, 69 बोल रहा हूँ, 680 समझ लो। If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? ट्रैवलर का ये वाला शॉट है अभी तो। मैं यूज ही नहीं करता हूँ ट्रैवलर को। नहीं, मैं इसका यूज करता हूँ। इन लोग को हटाना पड़ेगा फिर फिसैलिया को, किसी उसको। फिसैल है, यूंजिन है और बैनी है और वो ये मिया। टोन फिसैल नहीं है, पर वो डैमेज दे देती है फिर भी। यूंजिन हटा देता हूँ फिर मैं, यूंजिन। वही यूंजिन ही हटाता फिर। फिर बैनी को कहाँ हटा रहा हूँ, उधर से हटाएंगे, टीम से जब हटाना होगा। वही तो। अब मेरा यही नहीं निकल रहा, जंगली नहीं निकल रहा। 38 फुल हो चुका है मेरा, 38। 38 हो चुका है। मेरे को वो क्या नाम है, योमिया निकली थी 56 पे, 56 57 ऐसा समथिंग पे। 2 5 स्टार है वेपन। तो कितना? किया तो हूँ। चार तो वैसे ही तुम्हारे पास तो।
कितना? इतना 500. Lighter, please. अब देखो मैं इधर देखो अकेला हूँ, ठीक है? ये लोग हैं मेरे को मार रहे हैं. अरे मारो मत भी मर जाओ. अरे उसको लगाना नहीं है ना, मेरे को सिंगल दिखाना है डैमेज कितना दे रहा हूँ ऐसा. वो लगाऊंगा तो मेरे को एडवांटेज मिलेगा ना. अभी तो बिल्ड भी नहीं हुई है. होने भी तो चाहिए, बोलना होने भी तो चाहिए. हाँ पर हेजू को रखने का मतलब है सिरदर्दी पालना. प्लेयर तो अच्छा है बहुत ज़्यादा. हेजू को मैं करूँगा पर अभी नहीं करूँगा. उसको जब करूँगा जब मेरे पास रिसोर्स आ जाएंगे बहुत सारे. डीबीएस वो भी अच्छा है. डीबीएस हेजो भी मेरे पास क्या ही बताऊँ. पर C6 सब बोलते C6 हेजो सही वो है. डीबीएस तो मैं इसीलिए इसको नहीं कर रहा हूँ. वैसे भी इसका मटेरियल मिलना बहुत हार्ड है. इसका मटेरियल नहीं मिलता जल्दी. उसका वेपन कौन सा है? कौन? मैं बताऊँ मेरे को क्यों? हाँ तो वही है, मेरे को भी मिली है वो तो. 5 स्टार ही तो है ट्रैवलर. Have you ever kept goldfish as pets? वो डैमेज इधर नहीं दे पाता है. मेरे को फिसेल मिल चुकी है. पता नहीं, मैं बोला था शुरू में मेरे को मिलेगी, निकल जाएगी तुरंत ही. साला मेरे को सीधा जंगली चाहिए था. मेरे को ये लोग मिल गए पता नहीं क्यों. मैं सोचा था 2-3 जंगली मिल जाए बस खुश रहूंगा. फिर अगर मैं 50-50 हारता भी हूँ तो मेरे को कोई गम नहीं है. मेरे को बस वो चाहिए चीची चीची चीची.
अबे तेरे पास तो है नहीं, है पहले उठ गया आर्ट लगने दो। खंबे के पीछे छुप जाऊंगा। नहीं, खंबे के पीछे भी ऐसी तैसी करते रहा मेरी। मैं इसके पास गया नहीं है, बॉस उठ के पहले मेरे को पीलने लग रहा है। Fireworks are for now, but friends are forever. मैं इधर पत्थर तोड़ने में लगा हूँ। मेरे को इधर रास्ते में मिल गई तो। हाँ, वो तो मैं अलग से सेट करके रखा हूँ, रुको जरा उसको लगाते हैं। अरे ये पार्टी होनी चाहिए। जंगली है यो तो, जंगली। This world is full of unsolved mysteries. हैवी वेपन वाले सारे यूज तोड़ते हैं। इन दोनों को मैं इधर लगा रखा हूँ, पत्थर तोड़ने के काम में लगा रखा हूँ। इधर इधर इनसे वेपन बना सकते, पर वेपन उतने कुछ अच्छे है नहीं। मैं अगर रिपेयर मैं शुरू में कर दिया हूँ ना। जैनिट को तो वो दे रखा है।
तो दोबारा ढूंढ मिलेगा क्या हो फिर? हम्म हम्म Let me try my क्या है? This will do. Fire hazard. अब देखेंगे कि मिल गया तो अच्छी बात है, जब बोल दे तो मुश्किल ही है। अभी पहले पड़ा हुआ है मेरे को। ये इसका तो डैमेज भी नहीं होगा अभी, और मैं फाइट में कूद गया हूँ, उसको ही नीचे गिरा दिया। मेन समुराई को नीचे फेंक दिया, मर तो गया होगा नीचे गिर के। आना नहीं चाहिए, अगर आ भी गया तो इसको मैं मार दूंगा, उसका सोलो में तो ले दूंगा। मर गया नीचे जाके। नीचे पानी, अरे नहीं आ गया दाना कहीं अरे इसका ये अटैक है ना, बस ये अटैक से डर लगता है मेरे को। पर डैमेज तो है मेरे पास अभी, ये गलती है। फिर मैं भी हूँ ठीक, तभी अब मरेगा ये, इस बार मर जाएगा। हटा, मर गया। वो जो वैसे दिखते हैं जानवरों की तरह एकदम। इधर तो इनको मारने में मज़ा आता है, इधर शॉर्ट्स रहता है या फिर वो लोग गन वाले रहते हैं। वो मैं मैप खेला ही नहीं, मैं स्टोरी करके छोड़ दिया, और जो डेली का इवेंट आता है वो कंप्लीट कर लेता हूँ प्रीमोजन्स के लिए। मैं एक्सप्लोर नहीं किया, मैं मैप दिखा सकता हूँ। हाँ वो भी सही है। 59% किया हूँ मैं इधर, 71% उसको किया हूँ। मैं बहुत बड़ा मैप है तो। एंड कब होगी गेम? तो इसका वो स्टोरी लाइन एंड होगा या पूरी गेम खत्म हो जाएगी ऐसा? पर इन्होंने इस बार स्टोरी नहीं दी है, मेरे को क्यों लगता है ऐसा। मैं तो आया 3 खेलने को मिला था मेरे को। इसकी मेन सिटी तो ये है ना। सब में तो इसका स्टोरी एक ही रहता है कि इसकी बहन को ढूंढने जाता है और इसकी बहन मिलती नहीं है। सब मना कर देते, और जोंगली के पास है, जोंगली ने बोला है पर दूध दे नहीं सकता है। जोंगली ने बोला मेरा वो है, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट, जिससे मैं दे नहीं सकता हूँ। फाइनल वाले में ही फाइट होगी, इसकी बहन जो है उसको बचाएगा जो। वो क्या, वो दिख रहा है? अरे वो ना बादलों के अंदर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें आइलैंड है ऊपर। ये नहीं है।
देखो चिड़िया मारने का सही तरीका। मरी क्यों नहीं? टच होके वापस गिर के। नहीं मरी, नहीं मरी, बच गई, बच गई। मेरे को ये चाहिए यहाँ पे, ये स्टार, पर ये स्टार नहीं मिलेगा इतने ऊपर। क्या मैं उड़ के जाऊँगा? नहीं, उधर से भी नहीं जा पाता हूँ, पता है। मैं कम पड़ जाती है हाइट ऐसा। एक और चाहिए था वहाँ के, मैं जाके दिखा सकता हूँ ऐसे। क्या है? नहीं पहुँचेगा ही नहीं, मैं दिखाता हूँ ना। ये देखो पीछे छूट गया ना वो। पर उसकी हाइट अलग है, उसकी हाइट से मैं पीछे छूट जाता हूँ। दिखाता हूँ, देखो। मैं यहाँ पे जाने के बाद वो बहुत ऊंचा है, फिर भी मेरे सर के ऊपर से है वो। पर कैसे जाऊँगा? जाना तो उधर से मैं समझ गया, पर जाएगा ही नहीं मेरा कैरेक्टर ही। हाँ तो तुम्हारा यही तो है काजुआ, उसकी वजह से तो तुम गए हो। ओके, ये देखो, ये और ऊपर है, पता है। इससे नहीं पहुंचेगा मेरे कैरेक्टर। नहीं जाएगा उसके, मतलब सर के पास पहुंच के मैं गिर जाता हूँ नीचे। पहुंचने वाला था। अरे मैं ये भी जंप करने का बटन दबा दिया दोबारा से। वो अपने आप ही खोलता है, मैं जंप करने का बटन दबा दिया उसका भी। नहीं, इससे ऊपर नहीं है। ना ना, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये सब है, यहाँ पे थोड़ी ना जाने को मिलेगा। यहाँ से जंप करूँगा फिर भी नहीं आ पाऊँगा। इसके उंगली कर रहा हूँ मैं भी, पता है, पर इसको उंगली कर रहा हूँ। मेरे पास हेल्थ की कमी है, पर कोई नहीं, मजे लेगा मैं इससे। इसके अटैक इजी है एकदम, मतलब इजी चलते हैं। अरे वो खाने से पहले मैं उसको खा गया। देखो मेरा डैमेज देखना कितना कितना देता है वो डैमेज। और यहाँ पे है, पर ये किसी काम का नहीं है। हाँ, वो कंप्लीट कर लिया जो कि उसके लिए। अब मैं यहाँ से उड़ के जा भी तो नहीं सकता। वहां से भी उड़ के गिर ही जाऊंगा मैं, कहाँ जा पाऊंगा? ये देखता हूँ जंप। वैसे मेरे को नीचे का दिख रहा है वो जंप पर। अब मेरे पास है ही नहीं वो। ये रहा, देखो, ये है। मिल गया, मिल गया। तो इस साइड उल्लू बनाने के लिए दे रखा है इन लोगों ने। नहीं तो तो क्या मिल गया लोगों को भावनाओं के साथ खेल कर।
बंदा जो भी रहेगा मेरे जैसा उधर ही जाके करेगा उंगली, वहीं से ऊपर जाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। मैं ये तो इकट्ठा करता रहता हूँ, इधर ये रहा। नीचे गिर रहा हूँ अभी। ये भी अपग्रेड करना है 4 लेवल, तब जाके एक विश मिलेगा। एक विश के लिए इतना टाइम लग रहा है, और मेरे पास ये सिर्फ 2 है और ये 4 है, पता नहीं क्या यूज होगा इनका। ये तो मेरे पास सिर्फ 2 ही बचा हुआ है, ये मिला ही नहीं मेरे को। और ये अलादीन का चिराग पता नहीं कहाँ चीज का 13 है, ये 13 13 ऐसा। हाँ ये तो पता है मेरे को, ये इससे वो बनेगा। ये चाबी भी बची हुई है मेरे पास। मेरे मतलब का ही नहीं, मैं उसमें जाता ही नहीं। अब ये सब है। ये देखो, ये है मेरे पास ये। अरे वो उसी से तो बनाया हूँ मैं वो शॉर्ट। जब मैं उस दिन पूछ रहा था कि मैं बेनेट के लिए शॉर्ट बना लूँ क्या, वो वाली। अरे मैं बना लिया, उसके बाद तुमने मना किया। नहीं, शुरू में तुमने ही बोला था ना, देखो कि ये बना लेना, तुम्हारे पास वो शॉर्ट नहीं है। अरे नहीं थी, पहले मैं यूज़ कर लिया था, बताया तो था मैं गलती से। मेरी दूसरी आईडी में है वो वाला वेपन, इसमें नहीं है। ये देखो क्रिट डैमेज और ये मेरा क्रिट रेट इतना ही मेंटेन है मेरा भी। आर्टिफैक्ट से कुछ नहीं है। और ये तो अपग्रेड ही नहीं है, इसको तो 40 कर दिया हूँ बस मैं। इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं अपग्रेड करके अभी। अरे अभी नहीं है, अभी मेरे पास बुक्स ही नहीं है, तो मैं इसको अपग्रेड करने के लिए लगा ही नहीं रहा। C2 हो गई है भी फ्री की, भटकती आत्मा। मेरी C2 अभी हुई है, C0 थी फ्री में जब मिली थी मेरे को ये। ये देखो मेरे को ये मिली थी फ्री में, यही है ना, फिर ये वापस एक बार और मिल गई। कहाँ है बात, तो दे दे कोई दिक्कत नहीं, फ्री में ये भी बन जाएगी। डेंड्रो डैमेज पता नहीं कहाँ चीज़ का है, मेरे को वो दे दे, क्या बोलते, क्या था वो, एक दूसरा हीलर है ना, उसका नाम मैं भूल गया।
मुझे कुछ नहीं मिला। मैं बोला मेरे को उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला जोंगली वाले बैनर में से। हर दिन 100 मिलते हैं, 100 सिर्फ प्रीमो जेम्स। अभी तो मेरा वो बच रहा है, क्या बोलते हैं ये आर्कॉन क्वेस्ट जो है मेरा, अभी ये बच रहा है। ये सी मतलब जो भी चैप्टर 2 है मैंने खेला ही नहीं है। पर ये चलेगा ही नहीं ना, मेन मुद्दा तो ये है ना कि बाकी और भी है मेरे पास जो कि इनकी वजह से। ये 2 बचे हुए जो भी 2 हैं कंप्लीट। अरे खुद चला जा रहा है, वो खुद चला जा रहा है। ये मेन स्टोरी है ना टॉप वाली। तो ये क्या सबसे नीचे तो ये सब है, ये सब मेरे को देख देख के कर लूँगा मैं ऑफलाइन स्ट्रीम पे। मैं सारा कर लूँगा, दिमाग खराब होगा नीचे से जितना है। कौन सा वाला? कौन सा? समझ में नहीं आ रहा मेरे कौन सा। हाँ ये, हाँ हाँ यही ना ये। समझ में नहीं आ रहा इसे। ये वर्ल्ड क्वेस्ट 40 वाला मेगा। ये 2-3 बच रखा है मेरा। ये तो ये बच रहा है जिसमें प्रीमो जेम्स है। इन सब में प्रीमो जेम्स है। ये वाला क्या नाम है 3 और ये हैश क्या बोलते हैं /6 जो भी है ये भी आधा बच रहा है। ये में 3 तो मिल गया, 3 नहीं मिला। अरे मैं पता नहीं, मैं छूता हूँ उसका तो मैं भूल जाता हूँ मैं क्या किया क्या नहीं किया था। उसी में मेरा यही सब रह जाता है। उस दिन कॉप मोड मेरा ऐसे ही तो ऑफ हो गया था। मैं कोई क्वेस्ट छोड़ दिया था जो 1 दिन 2 दिन मेरा ऐसे ही चला था जो। अरे चलेगा ही नहीं, उसमें पजल वाला होगा तो दिमाग के दही ऐसी हो जाता है मेरा भी। क्या नहीं तो यूट्यूब से देख के कर लो। Let's light it up!
तो मेरे को भी रख के ऐसे ही करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ तो बुला लूंगा जब करना जब वो करना होगा, मेरे को पता ही नहीं। हम्म। मेरे को ये चाहिए, मेरा बस ये 1000 हो चुका है, पर ये 100 रिफ्रेश नहीं हो रहा है अभी तक। क्या 100 कौन सा ये? हाँ ये ना। अरे मैं सोचा जोंगली निकल जाएगा, दिमाग खराब था, मैं कर दिया। ये सब तो ही नहीं, इसको भी एकदम हाँ वो उस पे मिलता 5 स्टार पे 2-3। तो वो तो किस्मत ही नहीं है उतनी अच्छी। 4 स्टार वो भी, ये भी गारंटीड ही नहीं रहता, वेपन देते हैं ये लोग, हरामी लोग। सबसे पहली बात तो मेरा ये बच रहा है ना 1100, ये आ ही नहीं रहे। पाँच दिन में आएगा ये। हर हफ्ते करते तो अच्छा रहता है इनके लिए। मैं ये भी पता है मोरा लेके बर्बाद किया हूँ। अरे मैं मेरे पास ये बहुत सारे थे, बताया मैं मोरा के ऊपर वेस्ट कर दिया। हर में 10 या ऐसे कुछ मिलता है ये। हाँ वो नहीं वो तो मैं इसको बर्बाद किया हूँ सबसे ज़्यादा अभी तो। मेरे को पता ही नहीं रहता, मेरे अकाउंट में जो भी रहता है मैं सबको यूज़ करने पे लगा रहता हूँ। कुछ भी है मेरे पास वो यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो, ये है देखो। क्या मरने का क्या लेगी, आधी हेल्थ हो गई इसकी। इससे मैं मारूंगा पीछे उसकी जैसी दिख रही है। मर गई, मर गई। ये भी चाहिए अपग्रेड के लिए बहुत सारा। हाँ वही, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल जाती, पर मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिलता है। मेरे को कैरेक्टर ही नहीं दिया इन लोगों ने, ही दिया तो ये दिया है। मेरे को नया कैरेक्टर आने वाला है ना अगले अपडेट में, पता नहीं कभी। जीत गए ना इस बार तो।
सारे कैरेक्टर यूज करो, देखो जो मस्त लगता है उसके साथ खेलो। मेरे को तो देखो मेल कैरेक्टर मस्त, पहली बात तो मस्त है मेरे लिए। नया कैरेक्टर आने वाला है, 5 स्टार है मेल कैरेक्टर। पता नहीं कैसे खुलेगा ये। एक मिनट। ये तो गलत, मैं तो सही किया था पर ये गलत कर दिया है इसने, पता नहीं कैसे। अब इसने चेंज कर दिया है। नहीं नहीं चेंज किया है अभी इसने। अब ये अलग पिन चेंज कर दिया इसने, गधेड़ा कहीं का। ये चेंज करके खेल रहा है मेरे साथ। नहीं अभी तो वही है पर इसने खुला क्यों नहीं ये? अच्छा पहले यही करना है क्या? यार को पहले ये, फिर ये, फिर ये, हाँ टूट गया पर मैं मर गया। चल तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे वो ये है पर इसका हेल्थ नहीं है, मैं ये चीज़ है नोटिस नहीं किया। खिसक लियो मैं, मेरे पास वो नहीं है, हेल्थ नहीं है, और मैं हेल्थ में बढ़ाने वाला भी नहीं, मैं फूड इस्तेमाल करके। दोनों को पेलेगा मैं, दोनों को ही पेलूंगा मैं। हट जा नहीं तो तलवार मारेगा भी आरामी। दूसरा खड़ा होकर मेरे को देख रहा है एकदम हरामी वाली नजरों से। क्या कर दिया? डॉज करना आता है। मरने वाला है, कोई नहीं मरने वाला है, मैं डॉज कर लेगा। हाँ पहले हेल्थ ये होने दो एक बार, इससे ज़्यादा वो बढ़ता है। मर जा नीले वाले। उसने हेल्थ कर लिया, क्या मक्कार इंसान हेल्थ कर लेता है ऐसे। ये हरामी है, ये हरामी है, फुल अटैक पे आ गया अभी। एक हरामी मर गया, दूसरा हरामी बाकी है, पीछे रहे। मैं मेरे मरेगा नहीं, मैं तेरे से तो नहीं मरेगा। लियो बच गया। ये देखो ये सिंगल बॉस के लिए सही है, सर यहाँ पर डबल भी आ गए, कोई दिक्कत। 10 मिला मेरे को इससे। छू देता तो मैं खत्म था।
पर मेरे को एक भी बार डैमेज नहीं दे पाए दोनों को। वही। मेरा ये भी पेड़ भी अपग्रेड हो रहा धीरे धीरे। मिला है गोल्ड चैलेंज करने में। इधर 7 ये चाहिए मेरे को इसका अपग्रेड करने के लिए। पर डोमेन के अंदर चेस्ट अब बची नहीं है, मैंने सारा का सारा कर लिया उसका। मैं इधर आके करता हूँ, पता है मेरा विश करने का है, ये सबसे सीक्रेट तरीका है इधर आके। कहाँ पे? हाँ वो तो वही सब बच रहा है मेरा। प्रीमोजेम्स भी उसके अंदर बच रहे हैं। प्रीमोजेम्स मिलेंगे इसमें से। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं वो करता हूँ, चलो ठीक है मैं इतना कर लिया, प्रीमोजेम्स इकट्ठा कर लिया और खोला और कुछ नहीं मिला तो मेरा क्या। मैं इसलिए मेहनत नहीं करना चाहता हूँ उतना। मैं करना चाहूँ, मैं दिमाग लगा के जितना भी है मैं पेंडिंग छोड़ रखा हूँ ना, सब के सब यूट्यूब से देख के करूँ। इनमें भी 20 प्रीमोजेम्स है, इसमें भी 40 प्रीमोजेम्स है, 30 50, इसमें 40 है, इसमें 20 है, इसमें 40 है। देखो कितना प्रीमोजेम्स ऐसे पड़ा हुआ है इसमें। मैं करना चाहूँ इधर कर लूँ। क्या चीज? अच्छा ये ट्री 11 लेवल पे। अरे नहीं, मैं बताओ ट्री के लिए मैं पागल था क्योंकि इसके अंदर रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड जिसमें मिलता है ना वो मैं करता हूँ पहले ही। नहीं सुमेरा वाला नहीं देखा हूँ मैं भी। मैं अभी तक उसको छुआ नहीं हूँ। है तो मेरा ऑलमोस्ट कर तो रखा हूँ। ये लास्ट वाला। हाँ ये लास्ट। पर यहाँ का तो कंप्लीट कर रखा हूँ मैं। पाँच % सिर्फ उस जगह पे घूमा हूँ मैं। एक सेकंड में मैं, एक सेकंड बस। Fireworks are for now, but friends are forever. मम्मी है नहीं है?
ऊपर जाना है ना। तो 40 FPS पे चल रहा है ये। 40 FPS। इतना इस मोड मतलब इस मैप में इधर आने पे मेरा पूरा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। इनको ओवरलोड करने का पड़ रहा है। Time for a light. That didn't count. Oh, gotta watch it. Get back! Fire hazard! The fuse is lit! What do we have here? Up and away!
क्या बोल That's gonna hurt in the morning. Adventure time. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Ooh, let me open it. Up and away. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute.